Sonali, please, I guess you are unmuted. You may start. Okay, sir. Thank you. So, hello everyone. Good evening to all. So, we have left out with a previous question. Okay. So, that is your array with a pointer. We are done with this question. Now, we are continuing with the same topic actually. So, array with a pointer concept. So, see here we have array. Right now, you can see here we are with the array. Array name is ARR and it is holding 1, 2, 3. So first value gets stored at zeroth index, first index and second index. So implicitly your initializers will help us to get the your size of the array. So there is no any issue. Then I'm having another array BRR and that is also holding the same values. The most important, these are two arrays. Although they are holding the same data, they will get a separate memory. This is very important concept that you guys will may feel that okay 1 2 3 is a value of array 1 and then another array is there and that is also holding 1 2 3. So obviously they are holding same data, so they are equal. No, they are not equal, because as we have discussed in a previous lectures, array name always hold address of zeroth element. So array name always hold address of zeroth element, or you can say array name hold the address base address. Array name hold the address of zeroth element, or you can say it hold the base address. And addresses never be same. Addresses कभी भी same नहीं होते. Okay, so ये ध्यान में रखो that array name always hold the address of zeroth element. We even call it as a base address, and ARR is holding a base address of 1 and BRR is holding the base address of second array and that is also holding a 1. Okay, 1 is a value and it is having some specific address. So दोनों के address अलग अलग होंगे. Okay, so this condition ARR is equal to BRR. So ये जो दो arrow को हम लोग compare करें, here you are comparing not a element, you are comparing the values of the array 1 and array name hold the address. So you are comparing here addresses, not a values. Okay, so यहाँ पे address compare हो रहा है, values नहीं, and because of that, if you are saying like this, no, so suppose here I am having square parenthesis and I am saying zeroth index of data is equal to ARR of again a zeroth index of data, then right now you are comparing your values, but you are not with the indexes and anything, you are just having an array name, it hold the address and addresses never be seen. So here the else part will get executed and content of ARR and BRR is different. This will be the output. Okay, so this is the first question answer. Now we'll just move to the next question. See, you can see a pointer and array are mixed. Okay, we are just mixing these two concepts and trying to understand. Now see, we have an array here. So you can see I'm having an array ARR with some data. Obviously array name is in a smaller caption. So with some data. So see 1 2 3 4 5, these are the 5 elements, so it will definitely reserve your 5 slots. Every slot, in my case, in my compiler, which is Microsoft Visual C++, this is my compiler which allocates 4 bytes of memory. So every cell will hold the 4 bytes. Okay, first cell will hold your first value in a initialization section. So first value is 1, then this is your second value, then the third value is 3, so it will hold 3. The next value is your 4, so you will have a 4 here, and the next value is your 5. Okay, 1 2 3 4 5. Now array always work on index base, and you guys very well know that index will be like this. Index, first cell will have a index 0, then next cell will have a index 1, next cell will have a index 2, next cell will have an index something called 3, and next will be your 4. So size a -1. So this is the scenario. Now you know that array always work in a continuous memory area. Like
For an example, you are assuming, suppose you are assuming that first value, we are assuming, okay, addresses never be like this. So we are assuming that first value is at the 2000 address. And in my case, one seal will get a 4 bytes. So next value will be at 2004. Next value will be at 2008. So next value will be at something called 2012. Okay. Next will be at your 2016. So like this, you will get a continuous memory area. Now see, most important, array name always point to your address of a zeroth element. Array name हमेशा कहाँ point करता है आपका address of zeroth element. So array name will always point here to the address of your zeroth element. So array name is holding your 2000. ARR is a pointer, that is array name act as a pointer. Array name acts as a pointer and it hold address of zeroth element. Keep that in mind. So it will hold always the address of your zeroth element. That means ARR is right now holding, in my case, 2000. Okay. Now it is holding the address. Obviously it is holding address. Okay. Now I'm having one pointer type of variable, integer hai. It is a pointer, integer type of pointer variable, and name of the variable is PTR. So I'm having a PTR. So PTR is equal to ARR. You are storing the value hold by the array ARR, okay, into the pointer. So ARR is holding 2000, means obviously pointer will also get initialized to the 2000. Okay, so both of them are holding your base address. What is this? This is your base address, address of zeroth element. Here also it will hold, it get initialized to the same value. Because of that, it will also hold the base address. Okay, now star, see what you are trying to print. You are trying to print your pointer array, dereference operator and array name, dereference operator and pointer name, array and PTR. Now you guys very well know that it will always get executed from right to left. So first PTR. PTR, what it is holding? 2000. In our case, means what? You can say it will hold your base address. Okay, it will hold your base address. Then again ARR, again array name. So it will also hold your base address. It will also hold your base address. So I'm having both the base address. And on address, once you apply the dereference operator, what it will give you? It will give you the value hold by that address. So I'm saying star ARR, star PTR, both of them are holding same addresses, and you are applying the dereference operator that will give you a value hold by that address. So 2000, and on that I'm just applying the star, so it will return me 1. And in here also, in case of your star ARR, it will return your 1, and even on star PTR it will return 1, because both of them are holding same values. Okay, so see, array name acts as a pointer and it always hold the address of zeroth element. We even call it as a base address. So in my case, see, I'm assuming that my first element is at 2000 address. So ARR will hold the 2000. Now you are just copying the array value, ARR value, into the PTR. So PTR will also hold the same address. And once you apply the dereference operator, it will just return you the value hold by that address. So in my case, the star on a 2000 will give you the value 1. Okay. So we'll move to the next question. See, I'm having the array here. A is the name of the array. Okay, and array is holding my some values 1, 2, 3, 4, 5. Now you guys know that first value gets stored at zeroth index and all that. Initializer will take a, with the help of initializers, we can predict your size. So there is no any issue. Now, what you are trying to print, see,
you have written always the execution happens, printf execution happen from your right to left. So first value is something like this. So maybe student will fill here there is an error, but no, there is no any error. Most important, you can skip this कि आप बाहर array name लिख के index अंदर लिख सकते हो, or you can write index outside and array name inside your square parenthesis. Both are valid. So this is valid one. It means you are trying to print the from a array you wanted to get the data of from the 0th index. It evaluated to like this. It means like this. Okay, तो इसका मीनिंग यही है. So similar, you can interchange the locations of your array name and index. Okay, so this is valid one. It will not generate any error. Now see the most important. You are saying 0 of a means you are saying a of 0. तो array के 0th index पे क्या store रहेगा? Obviously first value, that is 1. So it will result into the 1. तो यहाँ पे result में क्या आएगा आपका? It will result into the 1. Now you are having another printf value. So see, I'm just copying it. Here we have the same, right? A of 0. So it will also result into your 1. Array के 0th index पे क्या store रहेगा? 1. Now the next important. See, you are having a dereference operator. In around a parenthesis, I'm having 0 plus a. Now you guys very well know that a is an array name and it will hold the address of a 0th element, and you are adding a 0 within it. So it is holding the base address, and within a base address you are adding 0 means you are not adding anything. It is nothing. So you are having a base address. Base address means what? Address of 0th element. And on that you are applying the dereference operator. So address के ऊपर अगर आपने dereference operator apply किया, obviously it will return you the value hold by that address, and it will be 1, because array name always hold address of 0th element. array name खुद एक पॉइंटर है, ये ध्यान में रखो. It hold the address of 0th element base address. and आप plus 0 कर रहे हो, plus 1 किया तो 4 bytes add होते हैं, that we have seen. but you are having plus 0 means you are not adding anything. So obviously it will remain on a base address, and on a base address you are applying the dereference operator. It will get evaluated to 1. Okay, now the another thing is there here, just for adding you confusion, they have interchanged the value of array name and index. See, but it doesn't matter, it will also get evaluated to same. There is a array name means your base address, and within address you are adding 0 means you are not adding anything, and on that you are applying your dereference operator. So it will get evaluated to something called your 1. Okay, so 1 1 1 1. Okay, now the another most important thing here, you are having a is holding your base address, and on that you are applying the dereference operator. Means you are trying to read a data stored on a 0th index, so it will also get evaluated to 1. So answer for this will be 1 1 1 1 1. Okay, so 5 times 1. Hope you guys get a clear idea. This is very important stuff, that array name itself acting as one of the pointer. It holds the base address. Base address means address of 0th element. Okay, so we'll just move to the next question. Hope you guys get the answer. Now see, next question. Here I'm having a pointer type of variable ptr. Okay, ptr is there. So ptr will get some memory. You guys know that ptr will get some memory, and that is 4 bytes. In my case, in my compiler, if you have a turbo c compiler, turbo c 3.0, then it will allocate 2 bytes. तो ये pointer and array का बहुत memory allocation is entirely decided on the basis of your compiler. If you are having Microsoft Visual C++ compiler, then it will add a 4 bytes. And if you have a Turbo C 3.0, then it will add a 2 bytes. Okay, so right now, see, I'm having a pointer, then I'm with the array.
You guys know that array is holding now 4 values, means array size is 4. You are doing declaration with the initialization here. You are initializing the array with the 4 elements. So that's why size will be 4. Now you are saying that PTR is equal to ARR. Now, as we have discussed in a previous examples, that array name will hold the address of 0th elements, means it will hold the address of 1. That address gets stored into the pointer. ठीक है? Now, you are accessing the element of second index. तो आपको पता है 1 will get stored into the 0. Then next value gets stored into the 1. Next value gets stored into the 2. So on a second index, I will have something called 3. Okay, I will have something called 3. Now, pointer is also holding your same value which is referred by your array. नहीं, okay. So this is a valid statement. अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है, no, not at all. It is a valid statement, and pointer also on a second index will hold the 3. It will behave same like your array. So there is no any problem. The answer will be 3, 3. Hope you guys get it. We'll move to the next question. See the next question. I'm having an array, and now array is a little bit bigger one. Okay. So as you can see, we are having a values 2, 8, 4, 1, 4, sorry, 2, 8, 3, 4, 4, 6, 7, 5. So these are the values. Okay. Now I'm having J, and I'm having one integer pointer also. See, declaration is together, might get confused that here we are having int J, integer type of J variable is there, and even I am having a pointer PTR, and it is getting initialized to your array. I'm saying that pointer, if you are initializing the pointer with the array name, so it is holding the same address, and it can behave like your normal array. Pointer can behave like a normal array. See, so what is the most important thing, that you are having elements. देखो एलिमेंट्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो ये हमारा array है. So first element is your 2. The next element is your, I will just take it below so that we will get a better explanation part. Okay, so I'm having 2 on a first line. Okay, 2 on a 0th index. Then we have a 8. Then we have something called 3. Then we have something called 4, then 4, then 6. Okay, and then your 7 and 5. So these are the values right now, 2, 8, and then we have index also, right? I is going to represent your index. So first index is 0. The next index will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is the indexing. Okay, this will act as an index. Index run from 0 goes up to the size of -1. Now, the most important, array name is ARR. Okay, what is the array name? Array name is ARR. Okay, so array name is your ARR, and array name will point. This is my array name ARR, and array name will point to your 0th index value, and it holds the address of 0th index. So array name will point here. Suppose the address is 2000, so it will hold the 2000 address. Suppose the first element is at the 2000 address. I'm having suppose address, and address is something called 2000, 2k. Okay, so it is holding the 2000. Array name will hold the 2000. Now you are initializing the same value to your pointer. So PTR will also hold your 2000. So we will have a PTR, and PTR will also get initialized to the 2000, and it will also point to the address of 0th element. So it will also point to the address of your 0th element. So it will also refer here. Okay. Actually not a value, it will refer to the address, and address is going to hold the value. Okay, so this is the scenario. Now what you are doing, you are just having a J. So J is starting from the 0. So instead of I, sorry, we have a J. So J is starting from the 0. J is going up to the less than a 5. You are saying less than 5. 5 is here.
So you are saying less than 5. So obviously it will go only up to this, up to the 4. So you are traveling only up to this. Okay. So we are considering only up to the 4. You are saying less than 5. So obviously less than 5 means your this stuff. Okay. Okay. So now we have percent D. You are trying to print the data. परसेंट डी है, हम लोग डेटा प्रिंट कर रहे हैं आपका, एंड प्रिंट किसके ऊपर करें, स्टार पीटीआर. सो पीटीआर इज होल्डिंग 2000. On a 2000 you are applying, you will go into that address, and as you have a dereference operator, you will print the value hold by it. So output will be 2. Okay, output will hold your 2. Now what you are doing, plus PTR, plus PTR, what it means, that you are adding a 1 in an existing value. So 2000 is there, and now you are saying 2000 plus 1. So whenever you add 1 in an existing value, basically it will add your 4 bytes. Basically it will add your 4 bytes in my case. Okay, and it will directly jump to the next address. So 8 is on a 2004. So it will evaluated to something called your 2004. Now on a 2004, first of all, you will check for a J value. So J value is right now 1. So you'll just come inside and you will just say that star PTR. So PTR is now holding 2004. Okay. So 2004 is holding 8. So we will get in output 8. Okay. Now you are doing the PTR plus plus, means PTR is holding the 2000. PTR में क्या hold है अभी? Right now PTR is pointing to your 2004. So it get modified. Now it is holding 2004. You are saying plus will add 1, means you are adding a 4 bytes, and it will get evaluated to something called 2008. Okay. So you will just jump to the next element. It will start pointing to the next value. Now before coming out of for loop, you will do the J plus plus. So J value is here. We'll check that is the J is less than 5 or not. Yes, it is less than 5. So you are just applying the dereference operator on your pointer, and pointer is holding now 2008. On a 2008, you are applying dereference operator. It will give a value hold by that address, and that will be your 3. Now again you are doing the plus PTR. So right now PTR get initialized to the 2008, and you are doing the plus means you are adding 1 means it will add your 4 bytes, and it will become your 2012. Okay, and once it become 2012, your pointer will refer to the address called 2012. Okay, so it will come here. Now before exiting, we'll do the J plus plus. So J plus plus will become your 3. It will point to the 3. We'll check for a condition. 3 is less than 5. We'll come inside. We'll apply the dereference. So PTR is now holding 2012. And on that, if you apply dereference, it will hold, return you the value hold by your address. That is your 4. Now you are doing again a plus plus. So right now PTR is initialized to the 2012, and you are doing plus 1. Plus plus will add 1. If you are adding 1 means you are adding 4 bytes, and once you add 4 bytes, it will get evaluated to something called 2016, and your pointer will start pointing to your next index. Okay, or you are saying next address. Okay, now before exiting, we'll do the J plus plus. J is 3. Now it will become 4, and 4 is less than 5. So we'll come inside, we'll just print the value hold by that address, because you are having dereference. So you have 2016, and on that you are applying the dereference, means you will get a value that is nothing but 4. So you'll get 4. Okay, now next one. You are doing plus PTR. Right now PTR is getting initialized to the 2016, and you are doing the plus
PTR means you are adding +1. It will get evaluated to something called +1 means 4 bytes. So 2020. So it will start pointing to the new address. Okay. Now before exiting, what will do? J plus plus. Now J will become 5. J will come here. J will become 5. 5 is not less than your 5. 5 is equal to 5. So condition get fail will come out and this will be your answer. 2835344. 28344. So this will be your output. Okay. So hope you get it. We'll move to the next question. See the next question. See again, it is a array and pointer. Okay. So I'm having a J. J is initialized to the 20. So J is a variable which is holding 20. Then we are having an array. Array is holding 10. Then J is there. Most of the people feel कि यहाँ पे मैम ने J pass किया है and J is a variable and here we require static constants values, but no, it is fine. That rule is for a size. That size must be a constant. It cannot be a variable. Okay, until and unless you are not having a macro. Okay, so if you have a macro variable like a macro, okay, or macro like a variable declaration, then you can have here the variable name. But if you are not with a macro and if you are passing J here, then it in as a size, then it will come up with the error. That size must be a static constant. Okay, because J is a variable and it will get a memory during runtime. But this is not a case here. We have a J in a value and that is fine. Okay, so in a value case, you can use the variables. So it will hold 10, then J value is 20. So it will hold 20, 30, 40 and 50. That's it. Now we'll have a I. Okay, we'll have a I. You can see here, I'm with the I variable. Then I'm with a pointer variable. An array is holding the base address. Array name is ARR. It will hold the base address and that base address get copied into the pointer. Okay, and here also we'll have a same scenario. यहाँ पे भी हमारा same ही scenario है. Plus plus. See, you are doing the plus plus and you are traveling from 0 to 5. So this is the element at 0, 1, 2, 3, 4. So you are traveling from 0 to less than 5 means you will go up to the 4. And as you can see here properly, you are having a 4 elements. And I will not explain this because it is same like a previous one, only there is a pre-increment and here we have a post-increment, but it will not make much difference because you are not printing the values, you are just storing it. Okay, so it will not make much difference. Okay, so now it will come up with something called 10, 20, 30, 40, 50. So this will be the output. Same like a previous one. Only thing is here we have a post increment. In a previous example, we have a pre increment. So first of all, you guys may feel that मैम ने यहाँ पे J लिखा है, यहाँ पे error आ सकती है because आपने ये सुना होता है कि size must be a constant. That we cannot able to use the variable. वैसे example हमने लिया था last lectures में. So here you cannot able to have a variable until and unless your variable is not a macro. Okay. तो यहाँ पे वेरिएबल नेम नहीं हो सकता, बट इनिशियलाइजेशन केस में हो सकता है, तो यहाँ पे एरर नहीं आएगी. ओके, आपको फील होगा कि यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है, प्रीवियस एग्जांपल में प्री इंक्रीमेंट है, इट विल मेक सम डिफरेंस? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज इफ यू आर प्रिंटिंग दैट टाइम इट विल मेक अ डिफरेंस, बट राइट नाउ यू आर जस्ट स्टोरिंग, so that time it will not make any difference. Hope you guys get it. We'll just move to the next question. See, you have something here. So क्या है? You have something here. You are having plus plus ARR and plus plus and ARR. So this is there. So what is it? So most important, it will come up with the error. This two prints come up with the error. It will give a compiler time error. See, पहले जो हमने प्लस प्लस लगाए थे ना, we have seen this example and that time it is like this star
plus star ARR or plus star. But here you don't have a star, means dereference nahi hai. So you are applying the increment and decrement on an address. And increment and decrement we cannot able to apply on an address. Okay, ये ध्यान में रखो. Increment and decrement operators are not applicable on address. ये ध्यान में रखो. Okay, so here you don't have a dereference. You are simply saying plus on an address here, and you are doing an address. Okay, and operator is there, so it is not applicable. So on this, as you are checking address, and on that you are doing the plus on this line, it will come up with a compiler time error. Okay, it will come up with a compile time error. We'll move to the next question. See the next question. So we have stdio.h and then void main, or sorry, int main is there, printf Sonali plus 2, and then there is 0. So what happened? You are saying plus 2, so it will just skip the first 2. This is double quote. Double quote means string. So Sonali is a string. Okay, Sonali kya hai aapka? Sonali is a string. As you are enclosing it in a double quote, it is a string. Okay, that is a string character sequence. And if you are adding a 2 into the string, it will just skip your yes, we have it in a capital caption. Okay, so it is a string and it will just keep your 2 digits, first 2 digit, and it will return you as a output NALI. Okay. Okay, so it will just skip your first 2 digit and it will return you NALI. So plus 2 operator behaves like this. Next question. See the question. Now you are saying printf %%%%%. So most of the people feel कि ये double quotes में है. So obviously it will print like this. आप सबका आंसर ऐसे ही होगा. Most of the people will give answer like this कि %%%%. It is considered as a string and it get printed like this. No, not at all. No, it is wrong. तो ये कैसे वर्क होगा? देखो, this first %, आपको पता है ना, %d, %c, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स. ओके, सो %d, %c, %f, lf, okay, like this. So format specifiers are there. So this is %, and here it will expect the format specifier. So there is no format specifier, so it will just print this %. Single %. Printing happen for this one. Okay, this is again a % and it will look for a format a specifier %d, c, like this, but it is not there, so it will print the this %. Next %. So that first % is considered as a format a specifier. Then it will look for a d, c, s, p, like this, but that is not exist, so that will directly print the %. जो भी है वो print करेगा. Second, this is the %. It is a format specifier, so it will not get printed. It will just check for a %, means d, c, what is it, but it is not there, so it will print your %. Okay, so output will be %%. It will be only 2 times because the first % is considered as your format specifier, and the next it is checking for a value. So this is the value and you are printing it. Then here this % is considered as a format specifier, and here it will print the value. Hope you guys got it. We'll move to the next question. See, these are the questions on a dynamic memory allocation. These are for the dynamic memory allocation. In case of C, always if you create an array, we mostly talk about the array. So array is a static data structure. You have to specify the size, and that much bytes get reserved. Like if you are saying 100,
integer array hai, and I'm saying the size is 100. So 100 into 4 bytes means it will reserve you 400 bytes. And if you are storing only 4 elements, means 4 into 4, 16 bytes you are using, and you will get allocated with a 400 bytes. Sorry, 400 bytes get reserved, and from 400 bytes you are using only 16 bytes of memory. So rest of the memory will get west. Okay, rest of the memory will lead to the west. Okay, which we don't want. And if data is less, it cannot able to shrink. The remaining memory will get west. The second thing, if your data is more, it cannot able to even grow. Like my size, my capacity of your array is 100. Capacity of the array is 100. And I want, means I can store only 100 elements, right? And I wanted to store, suppose, more 2 elements. That time it cannot able to even grow. So for getting this dynamic behavior, that if user is saying that I wanted to store only 3 elements, 3 into 4, 12 bytes must get reserved. If user is saying I wanted to store 100 elements, 100 into 4, the 400 bytes must get reserved. So depends on a user requirement, memory must get reserved. And during the runtime, if you realize that, okay, I'm saying 100, but now I wanted to add more too, then it must get resized also. I can runtimely increase the size of the element as well. तो ये functionality लाने के लिए C provide you something called dynamic memory allocation, and within that we have multiple functions like malloc, calloc, realloc, and free. Free to free the memory. So we have malloc, calloc, realloc, and free. These are the 4 functions coming from malloc.h header file. You have to import, or you can say you have to include that header file into your program, malloc.h, and from that we have this 4 functionalities. So here I'm with a malloc. So malloc is used for a dynamic memory allocation. It is used for a dynamic memory allocation. Okay, so this is your built-in function coming from your malloc.h header file. I'll just try to explain you the syntax of this function. Okay, so malloc is a built-in function and it will return you void pointer. So its return type is void pointer. Now, those who are not familiar with a void pointer is such a pointer which can hold your integer values. You can address of integer variable. You can initialize it to the address of float. You can initialize it to the address of your boolean, double, anything. Okay, so it can store the address of any data type. Okay, so it can store the address of variable with any data type. Okay, so आपका variable integer होने दो, character होने दो, float होने दो, double होने दो, it can hold the address of that. So void pointer, okay, generic one, it can hold address of any type of variable, and then function name is malloc, and function accept as an argument size. We require the size. Okay, now as you guys know that I wanted to get the size of integer here. You are saying the size of integer. Now we know that according to the Turbo C 3.0 compiler, we have a size of 2 bytes. And according to your Microsoft Visual C++ compiler, we have a size of 4 bytes. So it is not fixed. It is depend on a compiler on which you are running the program. So for that purpose, I'm not directly saying that size is 2 or size is 4, because I'm not with a confirm value, right? I'm not saying directly, sorry, I'm not saying directly that size is something called 2. Even I'm not saying something like size is 4. No, because it is not fixed. It is varying from compiler to compiler. So how I'm passing the size? Here we require a size. So I'm using size of operator, and I'm saying that I want the size of integer. So depend on my compiler on which I'm executing the program, it will take the size, and that much memory get allocated. Okay, so see what happened in this case. So we'll have a pointer ptr,
So PTR will get some memory. See, I'm just trying on a first example, we'll draw the diagram, little bit of diagram. So this is my pointer. The name of the pointer is your PTR. PTR is your pointer. Now this pointer variable is not initialized to anything yet. Okay, this is my pointer. It is having address something called 7890. 7890. This is the address. Okay, assume. Now, malloc will allocate some memory. See, malloc will allocate some memory, and that memory get initialized to the PTR. See, the most important, malloc will allocate some memory depend on a size passed to the malloc function. So I'm saying size of int in my case on my compiler, which is Microsoft Visual C++. This is my compiler. On that, malloc function will reserve your 4 bytes. So malloc function will here reserve your 4 bytes of memory. Okay. So this is the memory allocated by your malloc function. So malloc function will reserve the 4 bytes of memory. Suppose the address is something like this. तो यहाँ पे address लिख रहे हैं हम लोग. Address is 2056. This is the address. So this is the memory allocated by your malloc function, and this will get this address. It will allocate the memory, and this address get initialized to the PTR. So PTR is a pointer type of variable, and it will hold the address of the memory allocated by your malloc. So it will hold your 2056. And your pointer will point to that address, refer to that memory. Okay, so pointer will refer to that memory. So pointer will refer. Okay, so it will point to that memory and it will hold your address. So this is your PTR. And PTR is having this address. PTR get initialized to the memory allocated by malloc function. So malloc function runtimely depend on a value passed as an argument, that much byte it reserve. So size of integer. In my case, it will be 4 bytes. So it will reserve means what? You are passing 4 here, nothing else. Here you are saying size of int means you are passing your 4. So it will reserve your 4 bytes. It will reserve the address, and that address get initialized to your pointer. Okay. Now, what you are saying? Star PTR. Star PTR means a dereference operator. Go take the value hold by the pointer, go at that address, and then store the value within it. You are initializing it to the 2000. Okay, you are initializing it to the 2000. Now, the value of allocated object is, and you are saying star PTR. You are saying star PTR. So star PTR, obviously a dereference operator. Star PTR means what? Take the value hold by the pointer, go at that address and print the value hold by that address. So that is 2000. So here the output will be 2000. Okay. Now, the most important, I'm saying that basically it is this malloc function returns you void pointer. It will return a void pointer and you are storing it into the integer pointer. You are initializing it to the integer pointer. So see, there is one problem here, that you are getting the void pointer. Malloc function will return you void pointer, and you are initializing it to the integer pointer. आप किसमें store कर रहे हो उसे? Integer pointer में. You are initializing it to the integer pointer. So this time it will come up with the issue on some compiler. See, so lots of I have gone through this code many times. ओके एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि यहाँ पे आपको कास्टिंग लगानी पड़ेगी. As you are storing the void pointer into the integer pointer, as you are initializing the void pointer given by the malloc function into the integer pointer, PTR is an integer pointer, you have to apply the casting like this. Okay, so this is the thing multiple people are saying.
and as you are not with this casting, this code must come with a compile time error. तो बहुत बार मीन्स बहुत सारे जो solutions मैंने देखे हैं, I have gone through this code lots of on from lots of videos, lots of sites, and I come up with this कि यहाँ पे सब लोगों ने यही बोला है कि आपको यहाँ पे casting लगानी पड़ेगी to convert your void pointer written by the malloc function to the integer pointer as you are unassigning it to the integer. But when I run it on my Visual Studio Code, when I run on this, it is not giving any error to me. Okay. So it is getting evaluated to something called 200. Okay. तो बहुत सारे बुक्स में ये भी बोला है कि this will come up with the output called compiler time error. It will come up with the error called compile time error, and it will say can't convert void pointer to the integer pointer. So this is the compile time error. But on my visual code and within my compiler, it is not at all giving a error. I have seen this with the explanation, with the execution, and it is not at all giving a error. In my case, it is giving me a 200 output. Okay, so it is giving me 200 output. See, the next question, and within that, here, this code according to them will get executed successfully as it is applying your casting, and it will get same scenario will be there. And as you are having a casting, malloc function will return you the void pointer, and that you are initializing to the integer pointer, and that is fine because you are applying the casting. So here you will definitely get the 200 output. But in a previous example, they are saying that you will get a compile time error as you cannot able to convert the void pointer into the integer pointer. But you try to run on your system, you also check on your side. But I have checked on my system, it is not at all giving an error like this. It is generating the output called 200. Okay, so just verify even on your systems. See, we are moving to the next question. This is my next question. See, what is there? So I'm having a pointer, integer pointer. ये ध्यान में रखो कि आप pointer को declare कर रहे हो. So pointer will get some memory. You are having an integer pointer. Pointer will get some memory. So this is my pointer. So here we'll have this pointer ptr. And it will reserve 4 bytes of memory, and that 4 bytes of memory is having an address called 2345. This is the address. Okay, now this is right now holding a garbage value. There is no any memory. Now see, the most important, you are allocating, यहाँ पे casting है, so no worries. Okay, casting apply किया, malloc function always return you void pointer, and you are initializing into the to the integer pointer. So casting is there. So यहाँ पे तो कोई confusion है ही नहीं. So we'll just move ahead. We are passing the size of integer, so it will reserve 4 bytes for an integer. Okay, so it will allocate a separate 4 bytes for an integer. Here we will get a 4 bytes of memory. Okay, and this is your memory allocated by the malloc. Okay, so memory allocated by your malloc. Malloc will allocate this memory. Now this is your 4 bytes of memory. This is allocated by your malloc function as you are passing the size of int, and this memory get some address. First of all, it will get some address. So here I am with the address, and address is assumed that 7890. So this is the address, 7890. This is the address. Okay, 7890. This is the address. And now this address get initialized to your pointer. So pointer variable will hold your 7890. So it will get initialized to this. Okay, now pointer
will refer to that address as usual. It will refer to this address. Okay, it will refer to this address. Now, here the thing which you should remember is malloc function, memory, or you can say memory allocated by malloc function never get initialized implicitly. So never get initialized implicitly. Okay, so it will always hold the garbage value. Never get initialized implicitly. By default इसमें कोई भी value store नहीं होती है. That means it hold garbage value. So that means it will the garbage value. So ये क्या hold करेगी आपकी garbage value. So this memory block will not get initialized to anything. It will hold your garbage value. So ठीक है. Now see, this will happen on these two lines. First of all, pointer will get a memory, then malloc function will reserve some memory, and that memory will get initialized to your pointer, means pointer will refer to that memory area. Now the memory allocated by the malloc function will not get initialized implicitly. You have to initialize it explicitly to the value. As you are not initializing it, it will hold the garbage value. Okay, now what you are saying, value allocated by the object, and you are printing star ptr. So star ptr, go into the pointer, take the address, go at that address and print the value hold by it. So it will come up with a output called, output क्या रहेगा आपका, output will be your garbage value. Output will be your garbage value. Okay, so this is the explanation about your program. So output will be garbage value. Okay, so we'll move to the next program. Hope you guys get this answer. Now see, I have already explained you that malloc function is used for a dynamic memory allocation. And why we need dynamic memory allocation? Because array is a static one and it will may lead to the memory wastage. Okay, if you are having a less memory, and if you have a more memory, it cannot able to even grow. So these are the two problems with a array, and to resolve these problems we have a dynamic memory allocation. So we can use malloc for a dynamic memory allocation, which we have already seen. Then we have something called calloc. Calloc is again a function, and it is coming from malloc.h header file. And this function is also used for a dynamic memory allocation. So this function is also used for a dynamic memory allocation. Okay, so it is having some little bit of different syntax. इसका syntax थोड़ा सा अलग है. देखो कैसे syntax है. It will also return you void pointer. ये भी आपको क्या return करता है? It will also return you void pointer. Okay, so void pointer is there. It will return you void pointer. Now the function name is calloc, and it accepts two arguments. It takes as an input two values. First is count of element, इस कितने एलिमेंट्स है, 2 है, 3 है, 4 है. Okay, so count of elements, and second term it takes as an argument, that is size per element. Okay, size per element. मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया ये कि कैसे है. So it will take the two arguments. One is count of element कि कितने counts है आपके, and another it will take something called size of elements कि कितनी size है, size per element. Okay, for a 1 how much bytes you want, for a 2 how much bytes you want. So size per element, or you can simply say size, no issue. Okay, so it will take a size. Okay, so now here see what I'm saying here.
we are applying the casting, so no worries. Okay, it will return a void pointer and you are converting it into the integer pointer, so यहाँ पे कोई problem नहीं है. So you are applying the casting. Then you are saying that you want to store only one element. Okay, and you are saying that element will be of integer type, so that's why you are asking to allocate the size required for your integer. And to get the size of integer, I'm using size of operator. So I'm using size of operator. So size of int is 4, so it will reserve the 4 bytes of memory. So scenario will be same. See, scenario same ही रहेगा as you are declaring the pointer. First of all, pointer will get some memory, ptr will be there, and it will get some memory. So here I'm having a pointer ptr and it is reserving some memory here. Okay, ptr is there. It is having some address. Suppose we are assuming that address is something called 3456. This is the address of the pointer. Now your malloc function will reserve some memory, and as you are saying you want only one element, so it will reserve a value for only one element, and then that is equivalent size required for an integer. So it will reserve the 4 bytes of memory. So here it will reserve 4 bytes of memory. This is 4 bytes of memory allocated by your calloc. So calloc, and it will reserve your 4 bytes. It will reserve your 4 bytes of memory. This memory will have some address. इसका भी कुछ address होगा. We are assuming that address is something called 6789. This is the address. Okay, ये आपका address है. We are assuming this is the address. Okay, for this area. Now that memory get initialized to your pointer, so pointer will basically refer to that memory. Pointer will basically refer to that memory. Now the most important, as pointer is referring to that memory, pointer will hold that value, that is address 6789. So this is the value gets stored into the pointer. Now the next important thing, as you are using the calloc, okay, memory allocated using calloc function get implicitly initialized to the 0. This is very important. So get implicitly initialized to the 0. Memory allocated by the calloc function get implicitly initialized to your 0. Okay. So that's why this memory get implicitly initialized to 0. This address will hold the value 0. Okay. So as now you are trying to print the value, hold by star ptr. Star ptr means dereference operator. It will go into that address and print the value hold by it, and that will result into the 0. तो ये बड़ा difference है malloc and calloc में. So malloc will not allocate the memory. Malloc will allocate the memory which will not get initialized. It will hold the garbage value. Calloc will allocate the memory and it will get initialized to the 0. Okay. Okay, so I hope you guys get a clear idea about whatever topics we have covered. Okay, we have seen the dynamic memory allocation today using malloc and calloc. Even we have seen something called your array with a pointer. So hope you guys understand it. Thanks for joining. Stay safe, stay home, stay safe. Okay, take care of yourself. See you on the next day. Now you guys have an aptitude session. Enjoy it. Thanks for joining. Girija ma'am, you can continue.
Yes, so good evening, everyone. Warm welcome on a new day of this session. So, I hope you all are done with the technical session. So, let's continue with the aptitude session now. Please be ready with pen and paper so that आपको जो भी important लगता है, जो भी calculations करने हैं हमें, उसके लिए आप जरूर उसका इस्तेमाल कर सकते हो. So, please have a rough sheet with all of you. Please be ready with it, and let me share my screen with all of you. Just a moment, please. Yes. So today we are going to discuss some reasoning topics, that is data interpretation and data arrangement. So in data interpretation, first of all थोड़ा सा introduction देती हूँ. Exactly data interpretation क्या है और data arrangement क्या है. Okay. So data interpretation is nothing but आपको एक data दिया जाएगा. Like अभी उस data में क्या क्या रह सकता है, कुछ भी data रह सकता है. It is random, we can't say. मे बी मार्क्स का डेटा रह सकता है, पॉपुलेशन का डेटा रह सकता है, फूड फैक्ट्री का डेटा रह सकता है. डेटा कैन बी एनीथिंग. सी डेटा के तो बहुत बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, आपको भी ये बात पता है. ओके, सो डेटा कुछ भी रह सकता है ना. उसको एक इंफॉर्मेशन, उसको एक फॉर्मेट में हमें क्लब करके दिया होगा. जैसे कि कभी वहां पे पाई चार्ट हो सकता है, कभी वहां पे बार ग्राफ हो सकता है, कभी वहां पे लाइन ग्राफ हो सकता है, तो कभी जस्ट टैबुलर फॉर्मेट में डेटा दिया जाएगा. ओके, कभी कभी यही डेटा जो है हमें क्या दिया जाएगा, एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में दिया जाएगा, एक कंडीशन के फॉर्मेट में दिया जाएगा. एंड नाउअडेज सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर रियली पॉपुलर, बिकॉज आपको उस डेटा में से पूरा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है एंड देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं. रिमेंबर वन थिंग, दिस इज अ रियली गुड टॉपिक. एनालिटिकल इसमें बहुत टेस्टिंग होता है हमारा कि कंडीशन कैसे करनी है, उसका टेबल कैसे बनाना है, टेबल में एग्जैक्टली क्या डेटा आना चाहिए, एक्चुअली टेबल बनाने की जरूरत है या नहीं है, हम वैसे ही जा सकते हैं क्या. सो बहुत सारा एनालिटिकल थिंकिंग इसमें आपको करना पड़ता है. ओके, सो आज हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं रिगार्डिंग डेटा इंटरप्रिटेशन. ओके, सो डेटा देखने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि एग्जैक्टली कैसा है. अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस थोड़े से कंबाइन करके लिए है. कहीं पे हम टेबल बनाएंगे, कहीं पे सिर्फ कंडीशंस पे जाएंगे, कहीं पे पाई चार्ट भी रहने वाला है. फिर आता है डेटा अरेंजमेंट. नाउ व्हाट इज डेटा अरेंजमेंट? व्हेन यू सी अबाउट द डेटा अरेंजमेंट, आपको डेटा को अरेंज करना है. फिर वो डेटा कैसे फॉर्मेट में दिया जाएगा? अगेन इट विल बी इन अ फॉर्मेट ऑफ कंडीशंस. ओके, नाउ डेटा अरेंजमेंट में या तो आपको पेयर्स मैच करने हैं या फिर आपको सीटिंग अरेंजमेंट पे फोकस करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ अगेन सीटिंग अरेंजमेंट में भी बहुत अलग अलग टाइप्स है. उसमें लीनियर अरेंजमेंट रह सकता है, सर्कुलर अरेंजमेंट रह सकता है, पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट भी रह सकता है, अलग अलग शेप्स भी दिए जा सकते हैं. तो उसमें हमें डेटा को अरेंज करना पड़ता है. उसके क्या कंडीशंस रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वो थोड़े से चेंज होते रहते हैं. बट हाँ, डेफिनेटली हमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन में एक अच्छा एनालिटिकल एबिलिटी यूज करना पड़ेगा. बी पेशेंट विथ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, क्योंकि यूजुअली होता क्या है, ऐसे टॉपिक में क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, कंडीशंस बहुत बड़े होते हैं. तो मे बी यहाँ पे आपको बोरिंग लग सकता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन मैं क्यों पढूं. तो एक्चुअली इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं है. आपको क्या करना है, द मोमेंट यू सी दैट पैराग्राफ, पहले तो ऑब्जर्व करो एग्जैक्टली करना क्या है. वेदर इट इज अ सीटिंग अरेंजमेंट, वेदर इट इज अ फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट, या फिर सिर्फ वो पजल सॉल्व करना है, कंडीशंस पुट अप करने हैं, पेयर मैचिंग करना है, या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन करना है, एनालिसिस करना है. जस्ट एक बार देख लो, फाइंड आउट द कॉमन डेटा. सबसे पहली बात, जो कॉमन है वो साइड में लिख दो. कॉमन डेटा से रिलेटेड अगर कुछ कंडीशंस है तो वो कंडीशंस पहले सॉल्व कर लो. देन जो डेटा दिया गया है वन बाय वन कंडीशन रीड करते जाओ, रफ शीट पे नोट करते जाओ, एंड यस यू कैन एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी दैट क्वेश्चन, आपको 4 से 5 छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे. अगर डेटा कम है तो डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन रह सकते हैं, बट या 4 to 5 क्वेश्चन व्हेन यू डील विथ अ सिंगल क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन जिससे आप जब टेबल बनाओगे या उसका डेटा अरेंज करोगे, डेफिनेटली आपके 4 से 5 क्वेश्चन कवर होते हैं. एंड इफ यू डू इट प्रॉपरली, इफ यू डू इट सिस्टमैटिकली, आपको इकट्ठे 5 से 6 मार्क, अगर हमने यू समझ लिया कि सिंगल क्वेश्चन के लिए सिंगल मार्क मिल रहता है,
तो एक 5 मिनट में आपके 5 मार्क इमीडिएटली कवर हो जाते हैं, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग विदाउट एनी मिस्टेक, बिकॉज आप वहां पे वेरीफाई भी कर सकते हो इमीडिएटली अगर कुछ गलत हो रहा है तो. So this is the advantage of data interpretation and data arrangement. So let us see one by one क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं. I highly recommend please take a rough sheet with you. प्लीज साथ में लेके बैठ जाइए ताकि पैरेलली आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो. ऑल राइट, यस, चलिए लेट अस बिगिन नाउ. या फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ रहा है डेटा इंटरप्रिटेशन का. नाउ व्हाट इज गिवन हियर, देखो अभी दिस इज अ मेन, दिस इज कॉमन इंस्ट्रक्शन फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. आगे आपके लिए 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस रहने वाले हैं. जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे बोल्ड फेस में किया गया है, वैसे और भी क्वेश्चन नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे, ठीक है. बट दिस डेटा, ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है वो कॉमन है फॉर ऑल क्वेश्चंस, ठीक है. तो गलती अभी क्या होती है स्टूडेंट से, यू जस्ट रीड दिस क्वेश्चन, आप सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ते हो. व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड 2 चेयर्स टुगेदर. नाउ व्हाट यू डू, यहाँ पे जाते हो, देखते हो कि टेबल कहाँ पे है, चेयर कहाँ पे है, उतना ही कंडीशन एक्सट्रैक्ट करके लेते हो और आपको लगता है नहीं मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है. तो ऐसा नहीं करना है. यू आर हैविंग रफ शीट विथ यू, सो बेटर वहां पे सबसे पहले आप ये डेटा, ये जो कंडीशंस दिए गए हैं वो क्लब कर लो. सो राइट नाउ प्लीज डू नॉट लुक टूवर्ड्स दिस क्वेश्चन, पहले तो ये डेटा की तरफ ही देख लो. चलिए अभी देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है. वन बाय वन कंडीशन हम रीड करते जाएंगे और जैसे ही हमें एक आधा इक्वेशन मिलता है, एक आधा रिलेशन मिलता है, इमीडिएटली हम यहाँ पे नोट डाउन करते जाएंगे. ओके, या लुक हियर. Siddhartha has decided to start a new company, Siddhartha Travels. He wanted to buy some furniture, table, chair, air conditioners. He also wants to buy few desktops which will include monitor, CPU, keyboard and a mouse. देखो एक डेस्कटॉप कैसे बना है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस. एंड द कॉस्ट ऑफ ईच टेबल इज 13.5 times a cost of the cost of a mouse. चलो पहला कंडीशन हमें मिल रहा है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. आई होप पैरेलली आप भी वहां पे आपके नोटबुक पे लिख रहे हो, ठीक है. सो the cost of each table is equal to 13.5 times the cost of mouse. Yet we don't know anything about mouse. Please keep this as it is. Next, and the cost of chair is 3/5 the cost of table. ठीक है, अगला कंडीशन लिखते हैं हम. The cost of chair is equal to 3/5 the cost of table. Remember one thing, हर एक कंडीशन सॉल्व करने के चक्कर में मत लग जाओ. ये भी सॉल्व करना है, वो भी सॉल्व करना है, चेयर की भी वैल्यू निकालनी है, टीवी की भी वैल्यू निकालनी है, डेस्कटॉप की भी निकालनी है. ऐसा मत करो, पहले कंडीशन एक्सट्रैक्ट करो, जिनकी जरूरत है हम वही कंडीशन इस्तेमाल करेंगे. ओके, या नेक्स्ट व्हाट इज गिवन, द कॉस्ट ऑफ चेयर इज 3/5 ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टेबल. आई होप सभी पैरेलली मेरे साथ लिख रहे हैं. नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ एन एयर कंडीशनर इज 5 times द कॉस्ट ऑफ चेयर. एक एसी का जो प्राइस है वो कितना है, 5 times the cost of a chair. So 5 into chair. Next, what is the condition? The cost of monitor is 20% more than a cost of chair. This is very important condition and most of the students make a mistake over here. Monitor का cost कितना है रे, 20% more than the cost of chair. मॉनिटर का कॉस्ट मुझे किसके रिलेशन में दिया गया है, चेयर के रिलेशन में दिया गया है. नाउ whenever you see a percentage and whenever you see a word more, remember one thing, you have to add it in 100. Now why to add it in 100? Look at this. अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस किया है अटेंड, डेफिनेटली आपको पता चलेगा मोर एंड लेस में हम करते क्या है. नहीं किया है तो देखो यहाँ पे मैं क्विकली एक्सप्लेन करती हूँ why we have to change this value. Now, what is the cost of monitor? The cost of monitor is 20% more than a cost of chair. Okay? अभी देखो, let us assume chair का प्राइस 100 रुपीज है. अज्यूम कर रहे हैं हम, this is not true. Just assume करो chair का प्राइस 100 रुपीज है. What about monitor? Monitor says that 20% more है. Whenever we see 20% more, 100 से ज्यादा रहेगा. So what you have to do,
you have to find 20% of this number and you have to add it in 100. So what will be 20% of this number? It will be nothing but 20. So ये 20 आपको इसमें add करना पड़ेगा and thus the cost of monitor will be what? 120 rupees. गलती से भी cost of monitor सिर्फ 20 rupees मत लिख देना. You have to add this 20 in a cost of what? In a cost of chair. Now यहाँ पे हमें परसेंटेज में डील करना है. So whenever it is said that 20% more, what you have to do? Consider initial value as 100%. जो भी किसका चेयर का प्राइस रहेगा उसको 100% कंसिडर करो. 10 रुपए रहेगा, 1000 रुपए रहेगा, 400 रहेगा. कंसिडर इट एज 100% बिकॉज चेयर का वैल्यू मुझे कंप्लीट लेना है. चेयर का प्राइस मुझे कंप्लीट चाहिए प्लस आई वांट 20% एक्स्ट्रा, 20% more. तो in all मुझे कितना चाहिए रे? 120%. So whenever more word is used, you have to add it in 100. Okay. Now what about less? What if वहां पे less दिया होता? तो हम क्या करने वाले हैं? 100 से subtract करने वाले हैं. So whenever such a relation arises, please multiply that factor by 120 by 100. By 100 क्यों रे? Because it is in a percentage. ठीक है? Next, what is the condition given? A CPU cost 1500 more than a table. Rupees 1500 more than a table. So CPU is equal to what? Table. I don't know table का price कितना है, but हाँ, what is the cost of CPU? Table's price जो भी रहेगा plus उसमें क्या रहे? 1500 extra. Next, and the keyboard cost 4 times a mouse. कीबोर्ड का कॉस्ट कितना रहने वाला है? माउस से 4 टाइम्स रहने वाला है. 4 into mouse. And at the end, what is given? The cost of mouse is 1000 rupees. Okay? Yes. Now, if you see this condition, ये सभी condition सबसे पहले आपके रफ शीट पे आनी ही चाहिए. आई होप आप सभी ने पैरेलली मेरे साथ ये कंडीशन लिखे हैं. प्लीज कोई भी वैल्यू कैलकुलेट मत करना, क्लरिकल काम मत करो. एग्जाम में इतना समय नहीं है कि आप ये सभी वैल्यूज कैलकुलेट करो. जितने की जरूरत है उतना हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है? अभी देखो, जैसे ही आपको पता चल गया माउस का प्राइस 1000 रुपीज है, हमें कीबोर्ड का प्राइस मिल जाएगा, हमें टेबल का प्राइस मिल जाएगा, बिकॉज इट इज इन रिलेशन विथ व्हाट? माउस. जैसे ही टेबल का प्राइस मिलता है हमें चेयर का मिल जाएगा, सीपीयू का मिल जाएगा. चेयर इज रिलेशन विथ टेबल, सीपीयू इज आल्सो इन रिलेशन विथ टेबल. राइट. नाउ जैसे ही हमें इस क्या बोलते हैं अभी, हाँ, चेयर का प्राइस जैसे ही मिलता है हमें एसी का भी मिल जाएगा, मॉनिटर का भी मिल जाएगा. सो लाइकवाइज एज दिस कंडीशंस आर लिंक्ड विथ ईच अदर, हमें सभी की वैल्यूज मिलेंगी. ठीक है? आई होप दिस कंडीशंस आर क्लियर टू यू. नाउ एज द कंडीशंस बहुत सारे हैं, जिस क्वेश्चन में जो कंडीशन लगेगा वो ऑलरेडी स्क्रीन पे अवेलेबल है, इसलिए इसका टेंशन मत लीजिए कि मैं अभी इरेज करने जा रही हूँ, बट मेक श्योर दैट आपने इसको नोट डाउन किया है. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस कंडीशन as I have to find the answer for question 1. Let us see here. Now, what will be the cost of one table and 2 chairs together? Okay. Now, क्या रिलेशन दिए थे? Table is equal to 13.5 times of mouse and chair is equal to 3.5 times of table. That's it. ये दो कंडीशन ही सफिशियंट है. एंड पैरेलली एक बात याद रखो, माउस का प्राइस कितना है? 1000 रुपीज कंफर्म है. ओके, अब हमें कितने टेबल की प्राइस चाहिए? ओनली 1 टेबल. बट व्हाट अबाउट चेयर्स? वी हैव टू फाइंड प्राइस ऑफ 2 चेयर्स. नाउ लुक एट दिस, कॉस्ट ऑफ सिंगल टेबल एंड 2 चेयर. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ टेबल? 13.5 टाइम्स ऑफ माउस. सो क्या करना पड़ेगा हमें? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके. Now, what is the cost of chair? The cost of chair is 3/5 of table. Now, look here. This condition is going to give me cost of table. Yes, and directly मुझे यहाँ पे table का ही cost चाहिए. So, instead of calculating, I will keep it as it is. Okay. So, 3/5 of cost of table
Is this clear to everyone why we did like this? Because टेबल का प्राइस कितना है 13.5 टाइम्स ऑफ माउस. माउस का प्राइस है 1000, टेबल का कितना होगा 13.5 into what 1000. Okay, now what is the price of chair? 3/5 of table. We know the table's price is this much. Please do not calculate. मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ फ्रॉम डे वन. जिसका जरूरत नहीं है वो चीज कैलकुलेट नहीं करनी है. ओके, so 3/5 of table, this we done. But how much chairs we want? हमें ऐसी 2 chairs चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई किया है. Now if you could see here 13.5 into 1000, 13.5 into 1000 is common in both the terms. So can we take it outside of the bracket? Definitely ले सकते हैं. Now लेते वक्त यहाँ पे मैंने क्या किया है, जब भी हम डेसिमल को जीरोस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल रिमूव हो जाता है. ओके, सो यहाँ से एक जीरो हटा दो, ये डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा. सो इट विल बी व्हाट 135. बट येट 2 zeros आर रिमेनिंग ओवर हियर. सो यहाँ पे क्या हो गए 2 zeros अपेंड हो गए. सिमिलरली यहाँ पे भी वही प्रोसेस कैरी होगा. एक जीरो एक डेसिमल को एलिमिनेट करेगा. सो 135 into 100 यहाँ पे हमने कॉमन लिया है. अब यहाँ से हम सब कुछ कॉमन ले रहे हैं इसलिए ब्रैकेट में सिर्फ 1 बचता है. 2 into 3 6 डिवाइडेड बाय 5 बिकॉज ये हमने आउटसाइड लिया है. नाउ जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. व्हाट इट विल बी 5 into 1 5, 5 plus 6 11 by 5. सी कितना फास्ट हो गए रे कैलकुलेशन. इज देयर एनी नीड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टेबल सेपरेटली? इज देयर एनी नीड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ चेयर सेपरेटली? No, there is no need at all. Okay, so 5 2s are 10, 3 remaining 35, 5 7s are 35, 2 0 will be as it is, and 27 into 11, the final price, cost price of what? Cost of what? Not cost price, I am sorry. One table and 2 chair is what? 29,700. See how quickly we did it. Although it takes little time for explanation, but yes, when you will do this with pen and paper, definitely आपको पता चलेगा कि कितना कम समय लगा है. Put the conditions properly. जितना हो सके उतना कॉमन वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करो. ओके, ना सेम डेटा रहेगा, सेम कंडीशंस रहेंगे, बट अभी क्वेश्चन देखो चेंज होने वाला है. नाउ व्हाट इज गिवन ओवर हियर? व्हाट इज अ रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ सीपीयू टू द टोटल कॉस्ट ऑफ माउस एंड द कीबोर्ड टुगेदर. ठीक है, अभी आपके नोटबुक में देखिए सीपीयू से रिलेटेड कौन से कंडीशन है, कीबोर्ड से रिलेटेड क्या कंडीशन है. तो देखो यहाँ पे फिर से आ रहे हैं. व्हाट इज द प्राइस ऑफ सीपीयू? द प्राइस ऑफ सीपीयू इज प्राइस ऑफ टेबल प्लस 1500 rupees extra. Next, what about table? If I want to calculate a price of CPU, I need price of table. And what is the price of table? 13.5 times of a mouse. ठीक है. Next, what relation we know? Sorry, what we have to find? We have to find the ratio of CPU to price of mouse plus price of keyboard. एक और रिलेशन आपने देखा होगा कि कीबोर्ड का जो प्राइस है 4 times माउस है. यहाँ पे मे बी मैंने यूज नहीं किया है, बट डेफिनेटली आपको अगर प्राइस फाइंड करना है कीबोर्ड का तो क्या रिलेशन है? The price of keyboard is equal to 4 times price of mouse, and the price of mouse, you know, it is nothing but what? 1000 rupees. Okay, so CPU का प्राइस देखो, table's price plus 1500 rupees. 13.5 into 1000 plus 1500. Why 1000? Because mouse का प्राइस कितना है रे? 1000 rupees है. So the table's price will be 13.5 into 1000 plus 1500 divided by mouse price 1000 plus keyboard का प्राइस 4 into mouse, that is nothing but 4000. Yeah, now न्यूमरेटर में अगेन डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि हम जीरोस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. So 13,500 plus 1500 divided by 5000, 15,000 by 5000. The zeros will get cancelled. 5 3s are 15, 5 1s are 5. So what is the ratio? What is the required ratio of cost of CPU to mouse and a keyboard together? क्या आता है रेशियो? 3:1. सिस्टमैटिकली कंडीशंस लिखो. डेफिनेटली आपका हर एक क्वेश्चन 30 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट you should invest your 1 or 2 minutes, not more than that.
सफिशिएंट है जो डेटा दिया है वो फाइंड करने के लिए। जितना हो सके उतना कंसंट्रेशन वहीं पे रखो। बाद में अगर यहाँ पे देखो एनालिटिकल रीजनिंग में कंसंट्रेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपका ध्यान जरा सा भी हट गया तो एक जीरो इधर उधर हो गया तो पूरा आंसर गलत होता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में देखो व्हेनेवर द कंडीशंस आर लिंक्ड टू ईच अदर, गलती से भी एक आधा प्राइस एक आधा जीरो भी कम हो ज्यादा हो गया पूरे क्वेश्चन को वो अफेक्ट करता है। ओके, yes, I hope this question is clear to everyone. Let's move towards next question. Now, if the cost of a keyboard and a mouse increases by 20% and 15% respectively, what will be a total cost of desktop? Now, whenever this condition arises कि एक total cost find करना है desktop का, आप लोगों ने सभी कंडीशन लिख लिए हैं, कहीं पे भी वहां पे डेस्कटॉप मेंशन करके आया है क्या रे? नहीं आया है। बट अगर आपने रॉ डेटा देखा होगा शुरुआत का, देखो आई विल शो द स्लाइड वंस अगेन, तो वहां पे जरा देखो। नाउ हाउ दिस पर्सन दिस सिद्धार्थ वांट टू परचेस समथिंग। ओके, देखो फर्नीचर में वो क्या परचेस कर रहा है? टेबल, चेयर एंड एसीज। ही आल्सो वांट टू बाई फ्यू डेस्कटॉप्स। ठीक है, तो डेस्कटॉप क्या है? विच विल इंक्लूड मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। डेस्कटॉप आपके लिए अलग हो सकता है, ठीक है, आपके लिए टेबल भी डेस्कटॉप में इंक्लूड किया जा सकता है। आप बोलोगे हाँ मैम टेबल रखने के लिए टेबल तो चाहिए, क्वेश्चन में जैसा कंडीशन है डेस्कटॉप कंप्राइजेस ऑफ व्हाट? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, बस यही चार वैल्यूज आपको लेने हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी करंट स्लाइड पे चलते हैं जहां पे हमारा क्वेश्चन था। देखो, सो कॉस्ट ऑफ कीबोर्ड एंड माउस इंक्रीजेस। नाउ सबसे पहले तो देखो हमें कीबोर्ड चाहिए, हमें माउस चाहिए, वी वांट अ सीपीयू एंड वी वांट अ मॉनिटर, ये हमारे डेस्कटॉप के लिए जरूरी है। ठीक है, सो कीबोर्ड एंड माउस इंक्रीजेस बाय 20 एंड 15% रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब आपको ओरिजिनल प्राइसेस इस्तेमाल नहीं करने हैं, तो फिर कैसे यूज करेंगे? देखो बताती हूँ। सबसे पहले मॉनिटर का प्राइस क्या है? 20% मोर देन द चेयर, एंड मोर कैसे लेना है ये मैंने आपको बताया है, फिर से एक बार बताऊंगी इस क्वेश्चन में ना। चेयर का प्राइस क्या है रे? 3/5 ऑफ टेबल। अब आप बोलोगे मैम चेयर का प्राइस निकालने की क्या जरूरत है? क्योंकि मुझे मॉनिटर की रिक्वायरमेंट है एंड मॉनिटर इज रिलेटेड टू चेयर, सो आई हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ चेयर। नाउ चेयर इज रिलेटेड टू व्हाट? Chair is related to table, but do I know anything about table? No. How to find price of table? The price of table is related to mouse, and yes, I know the price of mouse is 1000 rupees, and I can find the price of monitor. Okay, so price of table is 13,500. अभी अभी हमने दो बार कैलकुलेशन किए, क्यों? 13.5 into 1000. Yes, एक जीरो इस डेसिमल को रिमूव कर देगा, दो जीरो अपेंड हो जाएंगे। So what will be the price of table? It will be what? 13,500. Okay. What about chair? The price of chair is 3/5 of the table. It means what you have to do? You have to multiply this value by 3 by 5. So 5 2s are 10, 3 remaining, 5 7s are 35, and 2 zeros will be as it is. So 2700 into 3, it will be what? 8100. Next. Now this is a very important part. अभी हमें क्या करना है? मॉनिटर का प्राइस फाइंड करना है। इट इज व्हाट? 20% मोर देन द चेयर। इट मींस 8100 का आपको कितना परसेंट निकालना है? 120%। वाई 120%? बिकॉज देखो जो भी चेयर का प्राइस है वो एज इट इज रहेगा, 20% मोर बोला है, प्लस उसमें 20% ऐड करना है हमें। ठीक है, सो दिस 8100 इज नथिंग बट 100%। जो भी वैल्यू रहे वो अगर हम एज इट इज लेते हैं, इट मींस इट इज 100%। जैसे कि 100 मार्क के एग्जाम में आपको 100 मार्क मिल गए, आपका परसेंटेज क्या है? 100। 50 मार्क के एग्जाम में आपको 50 मार्क मिल गए, परसेंटेज क्या है? 100। सो शेयर का प्राइस आपको एज इट इज लेना है 8100, एंड उसका क्या निकालना है? 120%। ऑलराइट, so this 20 cancel with this 20. 12 into 1, it is 12, carry 1. 12 8s are 96, 96 and 1 97, and 10 will be as it is. Okay, so what will be the cost of a monitor?
the cost of a monitor will be 9720 rupees. Okay, चलो monitor का price हमें मिल गया. Now let us see some more condition. I hope this part is clear to everyone. Now I am going to erase this part as we have to discuss some another part. Yes, चलिए monitor तक हो गया. Now we know mouse का price 1000 rupees है, but wait करो यहाँ पे, माउस का प्राइस इंक्रीज हुआ है 15% से और कीबोर्ड का प्राइस इंक्रीज हुआ है 20% से. Whenever there is increase, again you have to calculate 100 plus increase percent. यानी कि आपको कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा? 115% कैलकुलेट करना पड़ेगा. And the condition is what? Keyboard is 4 times mouse. Now, yes, how to calculate this value now? हमें क्या करना है? ये जो 1000 है इसका 115% कैलकुलेट करना है. ठीक है, 100% विल बी एज इट इज. यस, यहाँ पे अभी देखो कैसे कैलकुलेट करना है. 115%. 100% मीन्स 1000 रुपीज. अब मुझे 15% एक्स्ट्रा चाहिए. सो व्हाट आई विल डू, आई विल कैलकुलेट 10 and 5%. यस, परसेंटेज में आप ऐसा ब्रेक करके परसेंटेज फाइंड कर सकते हो, उसमें आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा. सो व्हाट विल बी इट्स 10%. 1000 का 10% क्या होगा रे? 100. इसमें ऐड कर दो. हाउ टू कैलकुलेट 5% ऑफ दिस नंबर? एज यू नो द 10%, व्हेन यू डिवाइड 10% by 2 you will get the 5%. You know it is 100. 10% 100 है, आपने अभी अभी कैलकुलेट किया. 10% of any number is nothing but just remove a zero from right hand side. Okay, I quickly repeat. 100% of any number is the number itself. 10% of any number is just remove a zero from right hand side. And what about 5%? 5% is 10% का half. 10% हमने निकाला 100, 5% is 50. So this will be what? 1150. What will be the new price of mouse? New price of mouse will be 1150. What will be the price of keyboard? कीबोर्ड का इनिशियल प्राइस कितना था रे? कीबोर्ड का इनिशियल प्राइस था 4 times of mouse. It means it was 4000 rupees. Now how much we have to increase? कितना इंक्रीज हुआ है रे? 20% से इंक्रीज हुआ है. इसका मतलब आपको इस 4000 में क्या ऐड करना पड़ेगा? एडिशनल 20%. So 4000. Now how to calculate 20%? Go and calculate 10% only. So 10% of any number is what? Just remove a zero from right hand side. So 10% is 400. We have to calculate 20%. 10 plus 10 कितना होता है रे? 20% होता है. So if you know the 10% is 400, what will be 20%? The 20% will be 800. So how much is the value of keyboard? It will be 4800. Now आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैम माउस का प्राइस इंक्रीज हुआ है, ठीक है, बट जब हमने मॉनिटर का प्राइस कैलकुलेट किया तब हमने माउस का प्राइस 1000 क्यों लिया? यस, द कंफ्यूजन इज देयर, डेफिनेटली देयर. ठीक है, देखो बोला क्या गया है, कॉस्ट ऑफ कीबोर्ड एंड माउस लैटर इंक्रीज हुआ है. ठीक है, बट जब हम मॉनिटर का प्राइस कैलकुलेट करने वाले हैं तो हमें हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से ही कैलकुलेट करना पड़ता है. सी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन रहेंगे, फॉर दैट पर्टिकुलर कंडीशन रहेंगे, वो हर एक के लिए नहीं रहेगा. ऑलवेज आपको 1000 रुपीज पर ओरिजिनल प्राइस पर ही ऑपरेशन करने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन ना रखो कि मैम हमें 1150 पे ये ऑपरेशन करने हैं. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मॉडिफाइड वैल्यू पे कभी भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किए जाते. The operations will be performed only on original values. All right. Yes. Now I got the price of monitor. I got the price of mouse. I got the price of keyboard as well. What one more remains? क्या बचा है रे? हाँ, CPU बचा है. तो CPU के लिए क्या कंडीशन था? CPU का जो प्राइस है टेबल के प्राइस से 1500 रुपए ज्यादा है. दिस वॉज द इनिशियल कंडीशन. आप सभी ने नोट डाउन किया है. सो डू आई नो द प्राइस ऑफ टेबल? यस, डेफिनेटली. हाउ मच इट इज? 13500. So what will be a price of table? Sorry, what will be price of CPU? 13,500 plus 1500 will be the price of CPU. That is nothing but 15,000. Okay, चलो
सीपीयू मिल गया, माउस मिल गया, कीबोर्ड मिल गया, मॉनिटर भी मिल गया। एंड रिमेंबर वन थिंग, माउस एंड कीबोर्ड का मॉडिफाइड प्राइस करना है कैलकुलेट। सभी वैल्यूज को ऐड करो, द टोटल विल बी व्हाट, 30,620। ठीक है, एडिशन आप सभी लोग कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट whenever you are doing the addition, please note down that values in a vertical manner। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने horizontal में लिखा है, बट आप प्लीज उसको vertical manner में नोट डाउन करो। सो स्टेप बाय स्टेप हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एवरी क्वेश्चन इज डुएबल, ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में कि जो हो नहीं सकता। ओके, चलिए लेट अस क्विकली मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ना हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ पे हमने माउस एंड कीबोर्ड के लिए कुछ चेंजेस किए। द चेंजेस वाज लिमिटेड फॉर दिस क्वेश्चन एज आई सेड यू अर्लियर। नाउ when we are moving towards next question, we do not have to take these changes into consideration। चलिए let us quickly move towards next question। Siddharth bought a table, a chair and a desktop for himself। A means one table, one chair, one desktop for himself। What was the total cost incurred to him? Now be careful, one table, one chair कोई बड़ी बात नहीं, but one desktop क्या क्या कंप्राइज करता है? सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, एज वेल एज मॉनिटर भी है। ठीक है, अभी आप बोलोगे मैम वन डेस्कटॉप का प्राइस हमने अभी कैलकुलेट किया है। नहीं, उसको कंसिडर नहीं करना है। क्यों? बिकॉज उसमें क्या किया गया था, कीबोर्ड एंड माउस के प्राइसेस चेंज किए गए थे। देखो ये गलती बहुत कॉमन है। पिछले क्वेश्चन, अरे अब भी कैलकुलेट किया है ना, मेरा तो काम हो गया। टेबल चेयर डेस्कटॉप सब कुछ मुझे पता है, क्योंकि अभी तक हमने टेबल चेयर कितनी बार कैलकुलेट किया। ओके, ऐसा नहीं है। दिस क्वेश्चन इज न्यू, डू नॉट रेफर दैट इट। न्यू प्राइसेस हमें यहाँ पे फिर से कैलकुलेट करनी है। कुछ चेंजेस नहीं बताए हैं, इसलिए माउस का प्राइस यहाँ पे 1000 रुपीज ही रहेगा। ऑल राइट, सो टेबल नाउ वी नो इट इज 13,500। चेयर नाउ वी नो इट इज 8,100। व्हाट अबाउट डेस्कटॉप? डेस्कटॉप के लिए माउस का प्राइस ले लो 1000। कीबोर्ड इज 4 टाइम्स द माउस, इसलिए कीबोर्ड का प्राइस रहेगा 4000। What about monitor? हाँ, monitor का प्राइस कुछ चेंज नहीं होगा, that will be as it is because it is 20% more than the chair, तो ये 9720 ही रहेगा। And what about CPU? टेबल से 1500 रुपए ज्यादा, यानी कि 15,000 as it is रहेगा। Okay, so let us add all these values, and when you add all these values, you will get the total as 51,320। Okay, yes, I hope this is clear to everyone। Now अभी देखो, किसी ने गलती से प्रीवियस क्वेश्चन का डेटा भी यूज कर लिया। ठीक है, लेट अस सी, यूज कर लिया, समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा आंसर चेंज होगा, आंसर इंक्रीज होके आएगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस माउस एंड दिस कीबोर्ड, वहां पे वो वैल्यूज अलग थे। यस, अभी करना क्या है, अगर आपने गलती से कैलकुलेट भी किया तो कीप इट एज इट इज। नाउ लेट अस रेफर टू प्रीवियस क्वेश्चन वंस। देखो यहाँ पे अभी, लुक हियर। नाउ व्हाट इज द एडिशनल अमाउंट? एडिशनल अमाउंट क्या है रे? माउस में एडिशनल अमाउंट है 150 रुपए। यस, कीबोर्ड में एडिशनल अमाउंट क्या है? 800 रुपए है। सो एडिशनल क्या हुआ है इसमें? 950 रुपीज एडिशनल हुए हैं। सो गलती से अगर किसी ने क्वेश्चन देखने के बाद सॉल्व किया ही है, वैसे डायरेक्टली वो डेस्कटॉप का अमाउंट ले लिया है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 950 रुपीज फ्रॉम योर आंसर। किसके आंसर से? सिर्फ ये डेस्कटॉप के आंसर से। ओके, इससे 950 रुपीज सब्ट्रैक्ट कर लो, टेबल एंड चेयर के अमाउंट उसमें ऐड कर दो, डेफिनेटली अगेन यू विल गेट 51,320। तो गलती हो भी गई तो डरने का नहीं, गलती का भी सोल्यूशन हमारे पास है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी चेक करते हैं। It was initially decided that 4 air conditioners will be installed, but later only 3 air conditioners and a fan were installed। If the cost of a fan is 1/10 of the cost of an air conditioner, what was the total cost incurred? फैन अभी तक हमारे डेटा में था क्या? नहीं था, बट हाँ उन्होंने देखो हमारा ख्याल रखा है, एक रिलेशन फिर से नया दिया है। द कॉस्ट ऑफ अ फैन इज 1/10 of the cost of an AC, एयर कंडीशनर। हाँ, AC के बारे में हमें कुछ रिलेशन पता है, डेफिनेटली पता है। अभी देखो यहाँ पे AC का जो वैल्यू है, इट इज 5 times of chair। नाउ
आई नो अ वैल्यू ऑफ वन चेयर, अभी अभी कितनी बार कैलकुलेट किया है, अब तक तो याद भी हो गया है. सो 5 into 8100, दैट इज नथिंग बट 40,500. एक एसी का वैल्यू है ये. कितने एसी का वैल्यू है? ओनली वन एसी का वैल्यू है 40,500 रुपीज. इनिशियली डिसाइडेड किया था 4 एयर कंडीशनर बनाओ. लैटर इट इज डिसाइडेड दैट ओनली 3 एयर कंडीशनर्स एंड अ फैन. ओके, यस. तो एसी का टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा रे? 3 एसी का भैया 40500 जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 3, सो इट विल बी व्हाट 1,21,500. चलो एसी का प्राइस हमें मिल गया. नाउ व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फैन? द प्राइस ऑफ अ फैन, द कॉस्ट ऑफ वन फैन is 1/10 of the AC, 1/10 of the cost of AC. Just multiply that factor, multiply that value by 1/10. एक एक जीरो यहाँ से रिमूव हो जाएगा. What is the cost of fan? The cost of fan is 4050. Now total cost हमें फाइंड करना है. तो 3 AC 1,21,500 and 1 fan 4050. The addition will be 1,25,550. Although the values are bigger, definitely the calculation summation is really doable. कभी कभी ऐसे करना पड़ता है. Okay? Yes. I hope this question is clear to everyone. Let us check for next. Okay. Now यहाँ पे हमारा पहला सेट खत्म होता है. अभी हमारा दूसरा सेट शुरू होता है. डेटा अलग रहेगा, नया डेटा हमें वहां पे रेफर करना है. सो प्लीज अभी इसको बाजू में रखो. अगर आप पैरेलली सॉल्व कर रहे हो तो एक नया पेज लीजिए और नए पेज पे कंडीशन बनाना शुरू कर दीजिए. क्योंकि क्या हो जाएगा, अगर आप वहीं पे सब कुछ बना रहे हो तो आपको बाद में समझ नहीं आएगा मैंने कहाँ पे क्या लिखा था. रिविजन करने में आसानी जाएगी. चलिए अभी आगे देखते हैं. यहाँ पे यस 3 कंडीशंस मुझे दिए हैं. पहले तो वो जैसे दिए हैं हम उसको पढ़ लेते हैं. ठीक है, ताकि आइडिया तो आ जाए एग्जैक्टली क्या दिया गया है. अगर पढ़ा ही नहीं तो आइडिया कहाँ से आएगा. चलो चेक करते हैं. फर्स्ट कंडीशन, अ को एजुकेशन स्कूल हैज 4,000 स्टूडेंट्स. The ratio of boys to girls is 3:2. All the students are involved in 5 different activities, which is gardening, debate, extempore, quiz and dance. Okay. एक स्कूल है जिसमें टोटल 4,000 स्टूडेंट्स है and the ratio of boys to girls is given, which is nothing but 3:2. All the students are involved in different activities. अलग अलग गेम्स चल रहे वहां पे. कोई गार्डनिंग में है, कोई डिबेट में है, कोई एक्सटेम्पोर में है, कोई क्विज तो कोई डांस. लेट अस मूव फॉर सेकंड कंडीशन. 16% of boys and 28% of the girls are in extempore and gardening respectively. 1/5 of the boys are in dance activities. The ratio of girls to boys in extempore is 2:3. Next, 25% of total number of students are in debate competition. Girls in dance are 60% of the boys in the same game. Same game मतलब dance को ही रेफर करना है. Okay. Next, 22% of the girls are in quiz and the remaining girls are in debate. Next, 18% of the boys are in gardening and the remaining in quiz. So, अभी हमने डेटा पढ़ लिया तो यहाँ पे क्या दिया है? सिर्फ परसेंटेजेस हमें दिख रहे हैं. अब ये परसेंटेजेस निकालने किसके हैं? जब भी हमें बोला गया है 16% of boys, it means that among the total number of boys only. ठीक है, सिर्फ बॉयज का जितना नंबर है उसमें से 16%. टोटल वैल्यू को रेफर नहीं करना है. बट क्या हमें बॉयज एंड गर्ल्स का नंबर पता है? नहीं पता है. बट वी नो समथिंग फ्रॉम विच वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स. नाउ उस स्कूल में कितने स्टूडेंट्स है? 4,000 स्टूडेंट्स है टोटल. यस, अमंग दैट रेशियो दिया है हमें बॉयज टू गर्ल्स का 3:2. सो व्हेनेवर डेटा इज कॉमन फॉर एवरीथिंग, पहले तो उसको कैलकुलेट करो. ठीक है, बिना वो डेटा कैलकुलेट किए हम आगे नहीं जा सकते. चलो लिख दो यहाँ पे टोटल 4,000 स्टूडेंट्स आर देयर. नाउ व्हाट इज द रेशियो गिवन टू यू बॉयज टू गर्ल्स? इट इज 3:2. हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ बॉयज? नाउ लुक हियर, जब भी रेशियो हमारे साथ होता है एक कॉमन फैक्टर होता है. सो 3x यहाँ पे 2x. लिखने की जरूरत नहीं, लिखो भी मत, टाइम वेस्ट हो जाएगा. नाउ डायरेक्टली अभी आपको क्या करना है? 3 and 2 को ऐड करना है. 3 and 2 5
This is nothing but this part indicates me total number of students, that is 4000. ठीक है, out of this 5 part boys के कितने parts है? 3 parts है. चलो, how to calculate number of boys? out of this 5 part boys के 3 parts है, तो 4000 में से कितने? 3 by 5 into 4000. 5 8s are 40, zeros will be as it is. The number of boys is what? 2400. What about girls? Among these 5 parts girls के 2 parts है. देखो यहाँ पे है ना 2 parts. Yes. So what about girls? 2 by 5 into 4000. 4000 why? Because total number of students are 4000. Yes. Again 5 8s are 40. 8 into 2 is what? 1600. Okay. चलिए, जो कॉमन डेटा था हमने फाइंड कर लिया. नाउ इसके आगे जो भी डेटा रहेगा हमें क्या करना है? सेपरेट बॉयज सेपरेट गर्ल्स को रेफर करना है. कभी कभी कॉमन को भी रेफर करना पड़ेगा, बट फिलहाल अभी हम पहले आगे तो चले. अब हमें क्या करना है? एक टेबल बनाना है. अब टेबल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले देखो यहाँ पे नेम ऑफ एक्टिविटी आएगा. आई होप सभी देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन की तरफ. व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज? गार्डनिंग, debate, extempore, quiz and dance. Who is participating? Boys and girls. I have to calculate number of boys and number of girls. Okay. Now यहाँ पे एक कॉलम मैंने एडिशनल बनाया है. कभी कभी क्या होता है, इंस्टेड ऑफ गिविंग द डेटा डायरेक्टली वो कुछ अलग कंडीशन देते हैं. कैसे? आपको पता चलेगा. ठीक है, अब ये चार्ट हम कंडीशन पढ़ते पढ़ते साथ में बनाने वाले हैं. सो लेट अस गो बैक ऑन दिस स्लाइड. फर्स्ट कंडीशन वी डन, हमने फाइंड कर लिया, चार्ट में डेटा लिख दिया. नाउ व्हाट इज गिवन ओवर हियर? 16% of the boys and 28% of the girls are in extempore and gardening respectively. देखो 16% of the boys are in extempore. किसका 16% हमें कैलकुलेट करना है रे? 2400 का 16% हमें कैलकुलेट करना है. अभी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ. whatever the number is, whatever, देखो जब आपको किसी भी नंबर का 16% या किसी भी नंबर का n% कैलकुलेट करना पड़ता है, इट मीन्स यू हैव टू डिवाइड दैट नंबर बाय 100. यस, ये मैंने आपको डे 1 पे भी बताया था. परसेंटेज मतलब यू हैव टू डिवाइड इट बाय 100. नाउ यू आर वेरी लकी. यहाँ पे जरा नंबर ऑफ बॉयज देखो कितने हैं? 2400 है. राइट. इट मीन्स जो भी कैलकुलेशन बॉयज के लिए होगी वो मुझे 2400 पे परफॉर्म करने हैं. यस. देखो यहाँ पे वैल्यू कुछ भी रहो, 10 रहे, 12 रहे, 50 रहे, कुछ भी रहे, ऑलवेज ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे. ऑलवेज हो जाएंगे. सिमिलरली देखो गर्ल्स के लिए भी 1600 है. आई डोंट केयर परसेंटेज क्या रहे, बट डिवाइड बाय 100 रहेगा. 2 जीरो विल कैंसिल, 2 जीरो विल कैंसिल. प्लीज आपके रफ शीट पे हर बार ये जीरोस कैंसिल मत करते बैठना. ये जीरो कैंसिल करने में 4 सेकंड लग जाते हैं. ठीक है, लगे तो कैलकुलेट करके देखो. वो 4 सेकंड कैलकुलेट करने के लिए 8 सेकंड लगते हैं. तो इसलिए लिखना नहीं है. ऐसी घटिया चीजें हम लिखते नहीं है. तो फिर करना क्या है? डायरेक्टली जो परसेंटेज दिया है उससे मल्टीप्लाई करो. बिकॉज बैकग्राउंड में ये प्रोसेस चलनी चाहिए. आपके टेक्निकल में रहता है ना, बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेसेस चलते रहते हैं. तो बैकग्राउंड में जीरो एलिमिनेशन का प्रोसेस चलना चाहिए, फोरग्राउंड में सिर्फ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन चलनी चाहिए. ठीक है. सो among all the boys 16% are participated in extempore and among all the girls 28% are in which activity? Gardening. तो देखो एक्सटेम्पोर में हम क्या करेंगे? सिर्फ 2400 का 16%. जीरो क्यों एलिमिनेट होते हैं आपको बताया गया है. सो जस्ट 24 into 16, दैट इज नथिंग बट 384. रफ शीट आपके पास बहुत मल्टीपल होते हैं, तो प्लीज थोड़ा खुला खुला लिखो, कैलकुलेशन करने में आसानी होती है. ओके. सो चलो लिख दिया हमने एक्सटेम्पोर के लिए 24 into 16 दैट इज 384. मल्टीप्लीकेशन कर लो, आंसर मिलेगा. 28% गर्ल्स, अमंग ऑल द गर्ल्स 28% गर्ल्स ने गार्डनिंग में पार्टिसिपेट किया है. व्हाट वाज द नंबर ऑफ गर्ल्स? देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. नंबर ऑफ बॉयज 2400 टोटल है, नंबर ऑफ गर्ल्स 1600 टोटल है. आप भी आपके चार्ट में लिख सकते हो. सो 1600 का 28%. जीरोस क्यों एलिमिनेट होते हैं मैंने आपको बताया है, बार बार लिखना मत. कैलकुलेट कर लो. यहाँ पे आंसर विल बी व्हाट? 448. चलिए प्रीवियस पेज पे फिर से चलते हैं, देखते हैं अभी यहाँ पे. चलो नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नाउ चेक हियर. नेक्स्ट कंडीशन दिस वन हो गया.
Yes, 1/5 of the boys are in dance activities. Okay, टोटल जितने भी बॉयज है 1/5 बॉयज जो है वो किस एक्टिविटी में है रे? डांस एक्टिविटी में है। तो चलिए डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 2400 को 5 से डिवाइड करेंगे। सो 2400 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू द वैल्यू 480। ठीक है, यस। चलिए फिर से देखते हैं अगली कंडीशन क्या दी गई है। अगले कंडीशन में द रेशियो यहाँ पे है, देखो, द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन एन एक्सटेम्पोर इज 2:3। हमें डेटा डायरेक्टली दिया है क्या? नहीं दिया है, बट हाँ व्हाट इज गिवन टू अस, जो भी गर्ल्स एंड बॉयज एक्सटेम्पोर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका उनका रेशियो क्या है? द रेशियो ऑफ देम इज 2:3। चलिए देखिए अभी यहाँ पे, सॉरी वी हैव टू मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। यस, सो एक्सटेम्पोर रिलेटेड समथिंग पार्ट, यहाँ पे इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया है। सो गर्ल्स टू बॉयज व्हाट इज द रेशियो? इट इज 2:3। नाउ हाउ टू यूज दिस डेटा to calculate number of girls, because I know number of boys participated in extempore. Yes, definitely. So how to utilize this data to calculate number of girls? Now ratio again, अभी अभी हमने कुछ रेशियो के साथ किया। girls indicate 2 part, boys indicates 3 part. So if 3 parts are equivalent to 384, what is the value of 2 part? क्या करेंगे रे हम यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। आई रिपीट अगेन, देखो यहाँ पे आई जस्ट इरेज दिस पार्ट। यस, लुक हियर नाउ, रेशियो का कैसे इस्तेमाल करना है। लुक लुक यहाँ पे बॉयज पार्ट इंडिकेट्स मी 3, सो आई नो द नंबर ऑफ बॉयज 384। एक्सटेम्पोर की बात चल रही है तो ये 3 पार्ट्स आर इक्विवेलेंट टू व्हाट? 384। डेफिनेटली एक ही प्ले चल रहा है तो अलग अलग नहीं रहेगा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2 पार्ट्स? कैसे करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो 2 into 384, 3 into यक्स, लेट अस से ये नंबर ऑफ गर्ल्स देगा, बट 3 into यक्स, यक्स का वैल्यू फाइंड करना है इसलिए हमें इसको डिनोमिनेटर में लेके आना पड़ेगा। ओके, सो 3 ones are 3, 3 twos are 6, 2 remaining, 3 8s are 24, 2 into 128 is nothing but 256। चलो एक्सटेम्पोर में कितने गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है? फिर 256 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है। चलो अभी अगली कंडीशन पे चलते हैं। लेट अस चेक द कंडीशन। आई गेस यहाँ पे हमारा सेकंड कंडीशन खत्म हुआ। यस, इतना ही दिया था। लेट्स गो फॉर थर्ड कंडीशन। व्हाट इज गिवन? 25% of total number of students are in debate competition. It is very important condition. Why? Because देखो word क्या रेफर किया है, 20% of the total number of students, not boys not girls, about total। यानी कि अभी हमें कौन सा वैल्यू रेफर करना है? 4000 वैल्यू रेफर करना है, बिकॉज एक स्कूल में कितने टोटल स्टूडेंट थे रे? 4000 थे। तो डिबेट में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? उसका 25%। चलिए कैलकुलेट करते हैं अभी हम यहाँ पे। नाउ वेयर इज डिबेट? सी डिबेट इज हियर एंड 4000 का हमें 1/4 निकालना है। आप बोलोगे मैम क्यों? 25% बोला था ना। डे 1 पे मैंने आपको बोला था स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद करने के लिए, अमंग दैट if it is giving you a 25%, it means it is 1/4। उसका आपको क्या कैलकुलेट करना है? 1/4। so 4000 into 1/4 is nothing but 1000। ठीक है, 25% टोटल के 25% स्टूडेंट ने डिबेट में पार्टिसिपेट किया है। क्या हमें गर्ल्स बॉयज पता है? नहीं पता है, बट हाँ व्हाट वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 1000। तो इसलिए यहाँ पे जरा साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा एक्स्ट्रा डेटा रहेगा तो हम थोड़ा साइड में लिखेंगे। चलिए, गर्ल्स इन डांस आर 60% of the boys in the same game। थोड़ी देर पहले हमने शायद डांस में कितने स्टूडेंट
Yeah, I guess my presentation is stopped. Just give me a moment. I will reshare my screen with all of you. Yes, I hope it's now visible to everyone. Just a moment. Sorry for the disturbance caused. Okay. Yes. Okay. Just a moment. Okay. So I repeat the condition which we are doing right now. क्या condition दिया था रे वो देखते हैं जरा यहाँ पे. What was the condition? 25. Yeah, we did this. Girls in dance are 60% of the boys in the same game. Boys 60%. किसका 60% कैलकुलेट करना है? डांस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उसका 60%. ओके, सो 480 into 60 divided by 100. ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल. सो 48 into 6 is nothing but what? 288. चलो डांस की गर्ल्स हमें मिल गए. चलिए अभी अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं. देखो खत्म होने आ रहा है. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. समझाते समझाते थोड़ा सा देर लगा. ओके, नेक्स्ट. 22% ऑफ द गर्ल्स आर इन क्विज. किसके 22%? जो गर्ल्स है उसके 22%. दे आर इन क्विज. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं क्विज में कितने गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है. ओके, सो क्विज इज ओवर हियर. 1600 का कितना परसेंट रे? 22%. पहले ही मैंने आपको बोला है बार बार वो जीरो लिख के कैंसिल मत करो. ठीक है, सो 16 into 22 विल बी व्हाट? 352. ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ है देखो. गार्डनिंग के गर्ल्स मिल गए, एक्सटेम्पोर के मिल गए, क्विज के मिल गए, एज वेल एज डांस के भी मिल गए. टोटल गर्ल्स वी नो 1600. कैन आई कैलकुलेट गर्ल्स फॉर डिबेट? यस. अब आप बोलोगे मैम ऐसे क्यों कैलकुलेट करना है? क्योंकि देखो हमें इसके बारे में सिर्फ इतना ही डेटा दिया था कि डिबेट में 1000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है. ठीक है, मुझे गर्ल्स पता नहीं, बॉयज पता नहीं, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल गर्ल्स में से ये सारे लोगों का एडिशन बना के सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. ओके, सो 1600 माइनस गार्डनिंग वाले गर्ल्स, एक्सटेम्पोर वाले गर्ल्स, देन क्विज वाले गर्ल्स एंड डांस वाले गर्ल्स. ठीक है, so when you perform the addition on this data and subtract from 1600, you will get the answer as 256. now let us quickly add this data. क्या दिया है? 448 plus 256 plus 352 plus 288. आप बोलोगे मैम एडिशन क्यों समझा रहे हो? हमें आता है आई नो, बट यहाँ पे कुछ अलग बताना चाहती हूँ इसलिए समझा रही हूँ. नाउ लुक एट दिस टू नंबर्स. ओके, 448, 352. yes, देखो 400 and 300 it will be 700. now look at this 48 and look at this 52. 50 और 50 कितना होता है? 100 होता है, राइट? अब देखो इंस्टेड ऑफ 50-50 हुआ क्या है? इधर का 40 इधर के दो उठ के यहाँ पे चले गए हैं. सो 48-52 समेशन कितना आता है? अगेन 100. 300 प्लस 400 700 प्लस ये 100 कितना हो गया रे? 800. यस, कितना फास्ट हो गया कैलकुलेशन. नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट 200 प्लस 200 कितना आ गया यहाँ पे? 400. ना नेक्स्ट यहाँ पे कितना है रे? देखो 88 है. 88 अगर हम उसमें 12 ऐड कर दे तो क्या वो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा? अब वो 12 कहाँ से ऐड करने हैं? तो इस 56 से ऐड करने हैं. कहाँ से? इस 56 से ऐड करने हैं. तो चलो 56 से 12 उठाओ, इस 88 में ऐड करो, कितना हो जाएगा? इट विल टर्न टू 100. 56 में से 12 हटा दिए तो बचा कितना? देखो 56 माइनस 10, 46. 46 माइनस 2 इट विल बी 44, राइट? तो समेशन कर दो इसका. दिस विल बी व्हाट? 4 4 एंड 4 and 1 5 and 8 13. 1344 गर्ल्स इसमें ऑक्युपाइड हो गई है. माइनस कर दो 1600 में से, you will get the answer as 256. The moment you calculate the girls, you know that total members are 1000. So 1000 में से 256 माइनस कर दो. अच्छा, यहाँ पे शायद मैंने बाद में किया है. ठीक है, बाद में तो वो आएगा ही, बट अभी के लिए मैं बता रही हूँ आपको. 1000 में से जब 256 माइनस करेंगे तो हमें डिबेट वाले बॉयज मिल जाएंगे. मे बी थोड़ा सीक्वेंस चेंज हुआ होगा करते करते. ओके, कोई बात नहीं. चलिए, आई होप दिस कंडीशन इज क्लियर टू एवरीवन.
Let us check for next condition. Now, what is given here? यहाँ तक हमने किया 22% of the girls are in quiz. The remaining girls are in debate. जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने ऑलरेडी देख के ही समझ लिया. देखो जब आप सिस्टमैटिकली लिखते हो ना, ऐसा होता है, कंडीशन पढ़ने से पहले ही पता चलता है कि अरे हमने तो ये कर लिया है. ओके, चलो नेक्स्ट. आखिरी कंडीशन क्या दिया है? 18% of the boys are in gardening and the remaining are in quiz. ठीक है, among all the boys 18% boys ने किधर पार्टिसिपेट किया है? गार्डनिंग में पार्टिसिपेट किया है. So 24 into 18, I already told you why zeros are eliminated. So 24 into 18 is what? 432. Now यहाँ पे डिबेट के बॉयज अभी कैलकुलेट करने पड़ेगी. यस, 1000 में से 256 माइनस कर दो, द आंसर विल बी व्हाट? 744. एंड जैसे ही हमें ये गार्डनिंग, डिबेट, एक्सटेम्पोर और डांस मिल गया, रिमेनिंग बॉयज ऐड कर लो, 2400 में से सबट्रैक्ट करो, एंड आंसर विल बी हियर व्हाट? 360. ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ खास एडिशन की बात बनती नहीं है, क्योंकि ऐसा डेटा यहाँ पे मैनेज नहीं हुआ है जैसा गर्ल्स के लिए हुआ था, तो इसलिए आपको ट्रेडिशनल वे से ही एडिशन करना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली यू विल गेट द नंबर ऑफ बॉयज फॉर क्विज. चलिए, अभी सब डेटा हमें मिल गया, गर्ल्स कितने हैं, बॉयज कितने हैं, किस गेम में, डेफिनेटली मिल चुका है. तो कैन वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चंस? चलिए क्वेश्चंस की तरफ अभी हम मूव करते हैं, देखते हैं वन बाय वन. द क्वेश्चंस आर गिवन टू यू. नेक्स्ट, which activity has the maximum number of boys in the school? कौन सी एक्टिविटी में मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज है? तो लेट अस रेफर आवर डेटा. चलिए डेटा को रेफर करते हैं. देखो अभी हियर 432, 744, 384, 360, 480. कौन सी एक्टिविटी में मैक्सिमम बॉयज है? 744. डिबेट एक्टिविटी में मैक्सिमम बॉयज ने पार्टिसिपेट किया है. ओके, नेक्स्ट, what is the number of girls in debate competition? डिबेट कंपटीशन में कितने गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है? 256 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है. सी देखो, आंसर कितने सिंपल होते, बस पढ़ के आपको टिक करना है. लिटरली ऐसा लगता है जैसे आप पीछे आंसर रहते हैं ना नोटबुक पे, उसकी तरफ देख रहे हो और यहाँ पे टिक कर रहे हो. But provided that you should perform all the data systematically, you should take all the conditions systematically. This is the logic behind data interpretation, और कुछ भी नहीं है. ठीक है, चलिए, I hope this is clear to you. Let us move for next question. Now here थोड़ी सी कैलकुलेशन की पार्ट आते हैं, हम चेक करेंगे कैसे आते हैं. The number of boys in dance forms what percent of number of girls in same activity? यहाँ पे x is what percent of y हमें पूछा गया है. So whenever such a question is asked कि कौन किसके कितना परसेंट है, तो what you have to do? x by y, and as you have to calculate percentage, multiply by 100. Now यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ बॉयज इन डांस, गर्ल्स के कितना परसेंट है, तो यक्स यहाँ पे क्या होता है? बॉयज होता है. वाई यहाँ पे क्या होते हैं? गर्ल्स. बट फॉर विच एक्टिविटी रे? फॉर ओनली डांस एक्टिविटी. तो हमें पहले नंबर देखना पड़ेगा, और इनका नंबर कहाँ पे है? तो हमारे चार्ट में है. तो चलिए चार्ट को रेफर करते हैं. देखो अभी यहाँ पे, चलो डांस, डांस के बॉयज कितने हैं? 480. डांस की गर्ल्स कितनी है? 288. चलिए चेक करते हैं अभी यहाँ पे, 480 divided by 288 into 100. See, this is the answer, but don't worry, I am going to tell you how to solve this. Okay, yes. Now if you could see here, this number is divisible by 4. Yes, as well as this number is divisible by 4. तो चलिए 4 से डिवाइड कर लेते हैं हम. 4 7s are 28, 8. Okay, next 4 2s are 8. नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है रे? 4 1s are 4, 4 2s are 8, and the 0 will be as it is. नेक्स्ट 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं. चलिए करते हैं डिवाइड. 3 2s are 6, 1 remaining, 3 4s are 12. Again 3 4s are 12, and this 0 will be as it is. फिर से 4 से डिवाइड करेंगे. देखो हिचकिचाना मत, मैम ये इतना स्लो स्लो क्यों डिवीजन चल रहा है, कब आंसर आएगा? जो जैसा आता है वैसा करो, क्योंकि वैल्यूज ही ऐसे बड़े बड़े आए हैं. सो इवन आई डोंट नो हाउ टू डू दिस. बट हाँ, यहाँ पे एक तरीका और अच्छा हो सकता है अगर आपको टेबल पता है. सो दोनों भी जो वैल्यूज है ना, वो 24 के टेबल में है. डायरेक्टली मैंने इसलिए नहीं बताया, यू मे गेट कंफ्यूज. डायरेक्टली भी मैं बता दूंगी, डोंट वरी.
Next 4 6 are 24, 4 10s are 20. Okay. Next 2 3s are 6, 2 5s are 10. 5 into 100 कितना आता है रे? 500 divided by what? 3. These all are remain over here. चलो अभी कुछ ऑप्शन नहीं है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा. 3 1s are 3, 2 remaining over here 20, 3 6 are 18, again 2 remaining over here, again 3 6 are 18, फिर से 2 बचते हैं divided by 3. So 166 2/3%. ये आंसर ऐसा क्यों आया है रे? बिकॉज जो नंबर ऑफ बॉयज है वो गर्ल्स से ज्यादा है. So whenever it is more, the answer becomes more in percentage. आप बोलोगे मैम परसेंटेज 100 के ऊपर कैसे रह सकता है? परसेंटेज तो 100 के बियॉन्ड रहना चाहिए या मैक्सिमम वो 100 रहना चाहिए, बट नहीं, परसेंटेज 100 के बियॉन्ड भी जा सकता है. अभी देखो यहाँ पे क्विकर कैलकुलेशन. 24 2s are 48, then again 24 1s are 24. How much remaining here? 4 remaining here. 24 2s are 48. इसको 4 से डिवाइड करो. 4 3s are 12, 4 5s are 20. See, whenever you know the table, how easy calculations become. 500 divided by 3 हमने अभी अभी कैलकुलेट किया. What is the answer? 1662/3. One more thing I wanted to tell you here. This answer can be written in this format as well. 166.66%. Okay. So even अगर ऐसा आंसर आपने निकाला है और आपको दिख नहीं रहा आंसर ऑप्शन में, तो मेक श्योर दैट वो ऐसा दिखे. 166.66. Next, the number of girls in quiz forms what percent of total number of students in the school? What are the total number of students? 4000 हमने देखा है. हमें क्या पूछा है? क्विज में जितने गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है वो टोटल स्टूडेंट के कितना परसेंटेज है. तो चलिए पहले तो देख लो क्विज में कितने स्टूडेंट ने, सॉरी कितने गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है. देखो व्हाट इज द नंबर ओवर हियर? 352 इज द नंबर ओवर हियर. तो चलिए देखो अभी यहाँ पे 352 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4000. जीरो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे. यक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई. आई रिपीट, व्हाट इज द फॉर्मूला? यक्स इंटू वाई बाई 100. हियर यक्स क्या है रे? नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्विज. वाई क्या है? नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल. नाउ हियर डिनोमिनेटर में आपको एक जीरो दिख रहा है. whenever there are zeros in denominator, it is always true that उतने डेसिमल न्यूमरेटर में आएंगे. तो एक जीरो है, एक डेसिमल न्यूमरेटर में आएगा. तो फिलहाल तो इसको साइड में रखो. चलो 4 से इसको डिवाइड करते हैं. 4 8s are 32, 3 remaining. Again 4 8s are 32. बट 88 डिवाइड बाय 0, एक 10 एक 0 है. 88 बाय 10, तो यहाँ पे क्या आएगा रे आंसर? 8.8%. ओके, आंसर ऑप्शन सी इसका आंसर ऑप्शन है लास्ट. हाउ इजी दिस मच? कितना इजी है देखो. जैसे हम डेटा फाइंड करते हैं, फोकस आपका डेटा पे होना चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन पे फोकस मत करो. ऐसा बोला है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? पहले डेटा फाइंड करो सिस्टमैटिकली. डेटा फाइंड करने के लिए कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगता है. इफ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग फुली ऑन द पेपर, 3 मिनट के ऊपर डेटा फाइंड करने के लिए नहीं लगता है. ठीक है, सिस्टमैटिकली चार्ट बनाओ, डेफिनेटली आपको आंसर आएगा. लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the total number of boys in extempore and debate together? Summation करना है हमें. तो देखते हैं extempore में कितने boys है और debate में कितने boys है. I guess debate में 746 थे. 744 है debate में. extempore में कितने हैं? 384. कुछ नहीं, हमें इसका क्या करना है? टोटल ही कैलकुलेट करना है. So 384 plus 744, the answer will be what? 1128. हाँ, यहाँ पे आप एडिशन के लिए वो तरीका अप्लाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू नियर टू 100 आई है. सो 3 and 7 इट इज कितना होता है रे? 300 and 700 इट इज 1000. नाउ 84 में हम क्या करेंगे? इधर के 16 पुश करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 100 हो जाएगा. अब अगर इधर से आप 16 निकाल रहे हो, 40 minus 10 34, 34 minus 6 28, बचा कितना रे? 28 से 1128. ये एक दिन में नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा. ठीक है, जैसे ही आप ये एडिशन देखते हो, प्लीज डू नॉट डू इन द ट्रेडिशनल वे. देखो आप कुछ अलग कर सकते हो क्या. DIs क्विकली सॉल्व करने के यही ऑप्शंस अभी है. ओके,
चलिए, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे ये डेटा सेट खत्म हो जाता है हमारा. जो भी क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिए. ओके, नाउ लेट अस क्विकली मूव फॉर नेक्स्ट डेटा सेट. यहाँ पे भी ऐसा ही डेटा दिया गया है. देखो अभी क्या दिया है. इन पीतमपुरा एरिया ऑफ दिल्ली, दिल्ली में एक एरिया है. देयर आर 1200 पीपल लिविंग इन 5 डिफरेंट अपार्टमेंट. अपार्टमेंट के नाम दिए गए हैं. दृष्टि, पैराडाइज, उमंग, मौर्य एंड कलाकुंज. द नंबर ऑफ मेल्स, जस्ट अ मोमेंट. Yeah, the number of males is 20 more than number of females. Please typing mistake ignore kar dijiye. The number of males is 24 more than the number of females. Next, 1/4 of the total number of population are in Umang apartment. 16% of the total number of population are living in Drishti apartment. पहले हम पूरा डेटा पढ़ेंगे ताकि हमें आइडिया आ जाएगा एग्जैक्टली हमें टेबल क्या बनाना है. नहीं तो एक कंडीशन आप पढ़ोगे और बोलोगे कि टेबल बनाना शुरू करता हूँ, ऐसा नहीं होगा. पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी पता चलेगा एग्जैक्टली व्हाट टेबल यू हैव टू मेक. बट हाँ, एक रफ आइडिया आपको आने लगता है कब? प्रैक्टिस होने के बाद. जब ऐसे 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इमीडिएटली पता चलेगा अरे पीपल आया है मतलब मेल फीमेल होगा, स्टूडेंट आए हैं मतलब गर्ल्स बॉयज ही रहने वाला है. ओके, सो दिस इज समथिंग कॉमन. तो चलो आगे देखते हैं. मौर्य अपार्टमेंट हैज 50 पीपल मोर देन दृष्टि अपार्टमेंट. The ratio of the number of males to females is 3:1 in Drishti apartment. The number of people in Kalakunj is 20 more than the number of people living in Drishti apartment. There are equal number of males and females living in Maurya apartment. 50% of the population of Paradise apartment are males. 3/4 of the population of Kalakunj apartment are females. Please typing mistake थोड़ा सा इग्नोर कर दो. अभी देखो यहाँ पे हुआ क्या है. नाउ डेटा इज गिवन, डेफिनेटली डेटा दिया है. थोड़ा सा परसेंटेज है, थोड़ा सा रेशो है, कहीं पे समेशन किया है, कहीं से मोर बोला है, कहीं से लेस बोला है, कहीं पे इक्वल बोला है. बट इन सभी के ऊपर सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमें यही पता नहीं है एग्जैक्टली कितने मेल से कितने फीमेल से. लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चन वी नो गर्ल्स एंड बॉयज कितने थे, बट क्या कैसा दिया था? डायरेक्ट दिया था कि नहीं? रेशो दिया था. रेशो से हमने गर्ल्स एंड बॉयज कैलकुलेट कर लिए. यहाँ पे कुछ दिया है क्या रे ऐसा कैलकुलेट करने के लिए? यस, डेफिनेटली दिया है. देखो यहाँ पे, सॉरी, total number of members, total number of people living in that all the apartments is 1200. And look here, the important condition of this question. अगर ये सॉल्व नहीं करोगे तो आगे नहीं जा पाओगे. The number of males are 24 more than the number of females. Do you know number of females? Do you know number of males? नहीं. Let us calculate this. Let us assume number of females as x. So how many male members will be there? दिया है number of male members are 24 more than the female members. Just give me a moment. Yeah, the number of male members are 24 more than the number of females. Assume कर लो female x है, male कितने हैं? x plus 24 है. How to calculate value of x? I know that male plus female gives me a total value of 1200. Yes, so x plus 24. X is female, x plus 24 is male. So total कितना है रे हमारा? 1200 है, because it is given in the question itself. So 2x plus 24 is equal to 1200. 24 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो. द आंसर विल बी व्हाट? 2x is equal to 1176. 24 राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा रे? सबट्रैक्ट हो जाएगा. यस, सो 2x is equal to 1176. x का वैल्यू है 588. व्हाट इज x? x is nothing but number of female. चलो, टोटल अपार्टमेंट में, उस टोटल एरिया में कितने फीमेल है रे? 588 फीमेल है. व्हाट अबाउट नंबर ऑफ मेल? फीमेल का नंबर मिल गया, टोटल में से माइनस कर दो, या फिर x plus 24 भी कर सकते हो. 588 में 24 ऐड कर सकते हो. दोनों तरीके यहाँ पे चलेंगे. तो 1200 minus 588, that is nothing but 612. जो कॉमन डेटा था हमने फाइंड कर लिया. अभी हमें फिर से टेबल बनाना है.
अब आप लोगों को आदत हो चुकी है टेबल बनाने की, अभी अभी हमने 2-3 क्वेश्चन किए ना, डेफिनेटली। सो हाउ विल बी आवर टेबल? देखो यहाँ पे एक थोड़ा डेटा एडिशनल आने वाला है। क्या एडिशनल आने वाला है? एक टोटल का कॉलम भी एडिशनल आने वाला है। ओके, सो दृष्टि, पैराडाइज, उमंग, मौर्य, कलाकुंज, ये सभी क्या है? आपके अपार्टमेंट्स के नाम है। तो यहाँ पे ये मुझे टोटल डेटा रेफर करना है इस कॉलम में फर्स्ट, सेकेंड कॉलम विल बी फॉर मेल, थर्ड कॉलम विल बी फॉर फीमेल, अनदर कॉलम विल बी फॉर सम रॉ डेटा। जरूरत पड़े इस्तेमाल करेंगे, नहीं पड़े नहीं इस्तेमाल करेंगे। चलो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या दिया है, कहां तक कर लिया रे हमने? यस, मेल फीमेल का डेटा हमने फाइंड कर लिया। 1/4 of the total number of population are in उमंग अपार्टमेंट। अभी मेल फीमेल को रेफर मत करो, टोटल का 1/4 किसमें है? उमंग में है, इसलिए मैंने यहाँ पे टोटल का कॉलम एक्स्ट्रा लिया है। यस, सो 1200 डिवाइडेड बाय 4, 1/4 कितना आता है इसका? 300 आता है। तो ये पॉपुलेशन उमंग में है। अभी मेल फीमेल का पता नहीं, उसको टच भी मत करना। चलिए लेट अस गो ऑन द प्रीवियस स्क्रीन टू रीड द फर्दर इंस्ट्रक्शन। 16% of the total number of population are living in दृष्टि अपार्टमेंट। उमंग में 1/4 ऑफ टोटल था, यहाँ पे दृष्टि में कितना है? टोटल का 16%। फिर से देखो यहाँ पे, आप लोग कितने लकी हो यार, जीरोस कितना एडजस्ट करके आए हैं, मुझे कभी नहीं आते ऐसे। ओके, कोई बात नहीं, चलो वेरी नाइस। बट या लुक हियर, टोटल अमाउंट, सॉरी अमाउंट नहीं, टोटल पॉपुलेशन 1200 है। यस, हमें इसका परसेंटेज निकालना है जब भी टोटल वैल्यू हमें यूज करने हैं। सो इट मींस हियर इट विल बी 100, राइट? तो यहाँ पे जीरोस कैंसिल, यहाँ पे जीरोस कैंसिल, तो हर बार हमें ये जीरो कैंसिल ही करने हैं ना, तो लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, 4 सेकंड वेस्ट होते हैं, जैसे कि आपको बोला है काउंट करने लगोगे तो 8 सेकंड और वेस्ट हो जाएंगे। चलो देखो फिर, सो 16% ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन दृष्टि। उमंग का हमने कैलकुलेट कर लिया, टोटल कितने है रे हमारे पास? टोटल पॉपुलेशन 1200 है। सो 1200 का कितना परसेंट? 16%, दैट इज नथिंग बट 192 lives in which apartment? Lives in a दृष्टि अपार्टमेंट। चलिए पहला कंडीशन आई गेस अभी यहाँ पे ओवर हुआ है। पहला कंडीशन मतलब ये पहला पैराग्राफ। ओके, या दिस इज डन। नाउ नेक्स्ट चेक करते हैं। मौर्य अपार्टमेंट हैज 50 people more than the दृष्टि अपार्टमेंट। बी केयरफुल, परसेंटेज नहीं है। 50 people more मतलब अपना साधा नंबर है 50, ठीक है? इसका मतलब दृष्टि का पॉपुलेशन अगर आपको पता है, उसमें 50 ऐड कर दो, आपको किसका मिलेगा? मौर्य का पॉपुलेशन मिलेगा। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। यस, वी डू हैव अ दृष्टि's population with us. Let us add 50 in it and 192 plus 50 you will get it as 242 and that is nothing but Maurya's total population. Okay, yeah, let us go for previous condition. चलिए चेक करते हैं अभी प्रीवियस कंडीशन में क्या दिया गया है। yes, next, what is the condition given here? The ratio of the number of males to females in a drishti apartment is what? 3:1. What is given? The ratio of number of males to females in a drishti apartment is 3:1. प्लीज बी केयरफुल, जब भी रेशियो दिया है उसी सीक्वेंस में लेना सीखो। मेल टू फीमेल क्या रेशियो दिया है रे? 3:1. नाउ आई नो द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दृष्टि। यस, इज इट? यस, कैन आई यूज दिस डेटा? देखो एक्स्ट्रा डेटा, जरूरत पड़ी हमें एक्स्ट्रा कॉलम की। मेल टू फीमेल क्या रेशियो है? 3:1. कैन आई कैलकुलेट एक्चुअल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल फॉर दिस दृष्टि अपार्टमेंट? डेफिनेटली। हाउ टू कैलकुलेट इट? देखो 3 + 1 कितना आता है रे? 4 आता है। ओके, नाउ आई नो द टोटल 192। आउट ऑफ दिस 4 पार्ट मेल को कितने रिसीव हुए हैं? 3 रिसीव हुए हैं। आउट ऑफ दिस 4 पार्ट फीमेल को कितने रिसीव हुए हैं? 1. एंड डू आई नो द वैल्यू ऑफ दिस 4 पार्ट? यस, हाउ मच इट इज? इट इज 192। सो 4 पार्ट में से एक पार्ट गया है विमेन के लिए, सो 192 में से कितना होगा? 4 4s are 16, 3 remaining, 4 8s are 32. So number of female in a Drishti apartment are 48. How to calculate number of males? बहुत तरीके हैं। टोटल आपको पता है, 48 माइनस कर दो। दूसरा तरीका क्या है? एक पार्ट का वैल्यू 48 मिल गया। यस, लुक हियर, रेशो इस्तेमाल करेंगे। एक पार्ट का वैल्यू 48 है, 3 पार्ट का क्या होगा? 48 into 3 कर लो। तीसरा तरीका देखो यहाँ पे लिखा है,
I know 3 parts are dedicated for male, out of which, out of 4 parts, out of 4 parts 3 part male के लिए है, तो 192 में से कितना, अगेन इसको आप मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करोगे तो इट विल बी 48, 48 इंटू 3 144। थोड़ी देर पहले मैंने आपको वही बताया ना, देखो फीमेल आर 1 पार्ट, सो 1 पार्ट इज इक्विवेलेंट टू 48, 3 पार्ट इज 3 इंटू 48, या फिर अलग तरीका 192 में से 48 सब्ट्रैक्ट करो। देखो एक ही वैल्यू सॉल्व करने के 3 तरीके मिल गए, इससे अच्छा कुछ तोहफा हो सकता है आपके लिए, मैथमेटिक्स में बेटा ऐसा होता ही है। चलो ठीक है, चलो मिल गए, नंबर ऑफ मेल 144, नंबर ऑफ फीमेल इज व्हाट 48। चलिए प्रीवियस कंडीशन चेक करते हैं क्या दिया गया है। रेशियोज का काम हो गया, दृष्टि के मेल फीमेल हमें मिल गए। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पीपल इन कलाकुंज इज 20 मोर देन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दृष्टि अपार्टमेंट। 20% नहीं बोला है, 20 मोर बोला है। ओके सो चलिए, दृष्टि के टोटल पीपल हमें पता है क्या रे, बिल्कुल पता है, और दृष्टि से कितना ज्यादा, सिर्फ 20 ज्यादा। सो 192 plus 20, you will get your total population as 212. Now look here, you know Drishti ke people, you know Umang population, you know Moria population, you know Kalakunj population. Can you calculate Paradise population? Definitely. कैसे calculate करेंगे रे, हमें पता है सभी को हम add कर देंगे and किस में से subtract कर देंगे, हम 1200 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए बाद में चलते हैं इसके ऊपर, अभी फिलहाल तो शायद दूसरा कंडीशन हमें करना है। आई विल गो विद द सीक्वेंस विच इज डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, दैट डजंट मैटर, आपको उसी सीक्वेंस से जाना है क्योंकि मुझे आपको ये प्रेजेंट करना है, इसलिए एक सीक्वेंस बनाना पड़ता है। ओके या लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट कंडीशन, वी डन विद दिस पैराग्राफ नाउ। देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स लिविंग इन Maurya apartment. Okay, do we know the total population of Maurya apartment? Yes. And what is the data given? That male and female जो है वो equal है. So to count the number of male and female, what do you have to do? You have to divide this by 2. So how many number of males are there? 121. How many females are there? Again it will be what? 121. Okay, let's move towards next condition. What is given? उसके लिए हमें प्रीवियस स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे या क्या दिया है, 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पैराडाइज अपार्टमेंट्स आर मेल्स। वेट वेट वेट, कितना प्यारा कंडीशन है, देखो उसी अपार्टमेंट का डेटा रेफर किया है, जितना टोटल डेटा है 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ पैराडाइज अपार्टमेंट्स आर मेल्स। ठीक है, जरा ये प्रीवियस कंडीशन पढ़ो और ये वाला कंडीशन पढ़ो, देखो एक ही कंडीशन कैसे अलग वे में दिया जाता है। There are equal number of males and females living in Maurya apartment. Equal मतलब half half है। अभी अगला कंडीशन देखो, 50% of the population of Paradise apartments are males. तो quite obvious क्या है रे, 50% फीमेल होगा, तो अगेन क्या है, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हाफ हाफ है, इक्वल है। देखो सेम कंडीशन बट वर्डिंग कैसा चेंज किया जाता है, जस्ट टू कंफ्यूज यू, बट आगे से आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे क्योंकि आप लोग अभी सीख चुके हो। नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है, पैराडाइज का पॉपुलेशन पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो वी नो द टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ पैराडाइज इज 1200। सो जो भी दृष्टि का है, उमंग का है, मौर्य का है, कलाकुंज का है, उसे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो क्या ऐड करो, ये यूनिट प्लेसेस ऐड कर दो। 300, 3 + 2 + 2 प्लस दिस 1 कितना आता है रे, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 कितना आता है 8, 800। अभी 800 में आपको क्या करना है, ये एक्स्ट्रा 42, ये एक्स्ट्रा 12 और ये एक्स्ट्रा 92 ऐड करना है। मैंने कहा था ना जहां पे कुछ अलग होगा जरूर बताऊंगी। सो दिस विल बी व्हाट 6, 9 and 1 10 and 4 14, carry 1 8 and 1 9। So out of 1200 ये 946 subtract कर दो, the final answer will be what 254। So paradise का total population क्या है रे, it is 254 and what is said that the number of male and female are again equal 50-50 है, तो इसको divide by 2 कर दो, the answer here will be what 127 127। okay या चलिए ये कंडीशन भी हमारा हो गया। अब अगले कंडीशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगले कंडीशन में क्या डेटा दिया है। आई गेस दिस इज द लास्ट कंडीशन। यस, 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कलाकुंज अपार्टमेंट आर फीमेल। जो भी कलाकुंज का टोटल पॉपुलेशन है
उसमें से 3/4 किसको डेडिकेट किया गया है? 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज फॉर फीमेल्स। तो चलिए, वी नो द कलाकुंज का टोटल पॉपुलेशन, इसका 3/4 कैलकुलेट कर दो। 3/4 इंटू 212, 4 5s are 20, 1 remaining, 4 3s are 12, 3 into 3 9, 3 5s are 15. I got the number of females for this Kalakunj. Can I calculate number of males? Definitely. Kaise? 212 minus 159. What will be the answer? There are only 53 male members living in Kalakunj. Now, look at the chart of male. I got all 4 values except Umang. Look at the female data. I got all 4 values again except Umang. Now, how to calculate Umang's population? तो इसके लिए हमें ओरिजिनल कंडीशन को रेफर करना पड़ेगा. Which was the original one? देखो ये मेल फीमेल वाला. अब यू समझ लो, ये मेल फीमेल अगर हम कैलकुलेट नहीं करते तो क्या हम उमंग का डेटा कैलकुलेट कर सकते थे? बिल्कुल भी नहीं. तो चलिए, हाउ मेनी मेल मेंबर्स डू वी हैव? यस, वी हैव 612 मेल मेंबर्स. यस, 612 टोटल है. एंड फीमेल कितनी है रे? टोटल 588 है. तो डेटा कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? ये काउंटर्स को आपको ऐड करना पड़ेगा, 588 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. फॉर मेल ये चारों वैल्यूज आपको ऐड करने पड़ेंगे, 612 में से सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे. तो इन चारों का एडिशन आता है, इन चारों का एडिशन आता है 445. 612 में से सब्ट्रैक्ट करो, इट विल बी 167. तो उमंग का पॉपुलेशन कितना है? 167. लुक हियर, टोटल पॉपुलेशन है 588, बाकी सभी डेटा ऐड कर दो. इट इज व्हाट? 455 समेशन आता है उसका, एंड द फाइनल आंसर विल बी व्हाट? 133. Now we got all the data, we got all the values. Now let us move towards the question set. चलिए देखते हैं, जैसे ही डेटा मिलता है क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाते हैं. देखो यहाँ पे what is given? The total number of females in a Drishti apartment and Kalakunj apartment together are how much more or less than the total number of males in Paradise and Umang apartments together. निकालना क्या है? पहले तो लिख दो, नहीं तो इतना कंफ्यूजन होगा ना, पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली करना क्या है. सो टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन विच अपार्टमेंट? दृष्टि के फीमेल्स प्लस कलाकुंज के फीमेल्स. ठीक है. नेक्स्ट क्या ऐड करना है रे हमें? टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन पैराडाइज. यहाँ पे लिख रही हूं मैं, पैराडाइज वाले मेल्स एंड उमंग वाले मेल्स. हमें पूछा है कि ये जो नंबर ऑफ फीमेल्स है इन मेल्स से ज्यादा है कि कम है, कितने से कम है, कितने से ज्यादा है. तो प्रीवियस स्लाइड पे हमें जाना पड़ेगा. लेट अस चेक. दृष्टि के फीमेल, कलाकुंज के फीमेल. कहाँ पे है दृष्टि? देखो 48, कलाकुंज के कितने हैं? 159. हमें क्या करना पड़ेगा? 48 प्लस 159 का समेशन, दैट इज 207. राइट. उसके बाद पैराडाइज के मेल्स, उमंग के मेल्स, या टोटल है रे? हाँ, टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन पैराडाइज एंड उमंग. डेफिनेटली टोटल नंबर हमें फाइंड करना है फॉर पैराडाइज एंड उमंग. पैराडाइज के मेल है 254, उमंग के मेल है 300. सो लेट अस ऐड दोज वैल्यूज. यस, सॉरी कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? पैराडाइज एंड उमंग ना, ओ सॉरी, मैंने टोटल डेटा ऐड किया. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हमें सिर्फ मेल मेंबर्स ऐड करने हैं. आई एम सॉरी. यस देखो 127 है. आई एम सॉरी, 127 एंड व्हाट? 167. यस, चलिए ऐड करते हैं. 121 प्लस 167, इट इज 294. नाउ मेल मेंबर क्या है रे? लेस है. सॉरी, फीमेल मेंबर क्या है? लेस है. कितने से लेस है हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 294 में से 207 माइनस करना पड़ेगा. 94 में से 7 माइनस कर दो, क्योंकि 2 से 2 माइनस करोगे तो 0 ही होगा. 94 में से 7 कैसे माइनस करेंगे? पहले तो 4 निकाल दो 90, 3 निकाल दो 87. जितना हो सके ओरली कैलकुलेट करना सीखो. कैलसी का प्लीज इस्तेमाल मत करो. ओके, प्लीज मत करो, आपके फायदे के लिए ही रहेगा. नेक्स्ट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल in Paradise apartment to the number of people in Kalakunj apartment? Remember one thing, यहाँ पे people बोला है, इसलिए हमें डायरेक्टली टोटल डेटा को रेफर करना है. So total people in Paradise to total people in what?
कलाकुंज। रेशियो जब फाइंड करना है बहुत काम आसान हो जाता है। चलो पैराडाइज और कलाकुंज के टोटल पीपल हम देखते हैं। पैराडाइज के है 254, कलाकुंज के है 212। let us take a ratio of these two values and here 254 to 212 किससे डिवाइड कर सकते हैं रे हम? 4 से हो सकता है क्या? इज इट डिविजिबल? नहीं, 4 से नहीं, 2 से ही करना पड़ेगा। 2 1s are 2, 0 क्योंकि एक को डिवाइड नहीं कर सकते। 2 6 are 12। नेक्स्ट 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 remaining 14, 2 7s are 14। इवन ऑड का कॉम्बिनेशन हुआ है, सो नॉट फर्दर डिविजिबल। 6 and 1 7, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, एज वेल एज ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। कोई बात नहीं, चलो ऐसा ही रख दो, आंसर ऑप्शन में वैसा ही दिया है। 127 is to what? 106। ओके, सिंपल क्वेश्चन। रेशियो होता है तो जस्ट हमें कॉमन फैक्टर एक्सक्लूड करते जाना है, अनकॉमन पार्ट रखना है। let us check next question. The number of males in Umang apartment is what percent of total number of females in all 5 apartments together? ठीक है, उमंग के जो मेल है टोटल फीमेल के कितना परसेंट है? अगेन कैसा क्वेश्चन है रे? x is what percent of y, so x by y into 100। उमंग के मेल टोटल के फीमेल। अभी देखो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, आप लोग क्या करते हो हड़बड़ी में, फीमेल का एडिशन करते बैठते हो, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? देखो बताती हूँ। बिकॉज वी ऑलरेडी नो द नंबर ऑफ मेल्स, राइट? we already know the total number of females. How much it is? It is nothing but 588। उमंग के मेल कितने हैं रे? उमंग के मेल है 167। तो चलिए चेक करते हैं क्या आता है आंसर हमारा। यस, उमंग के मेल 167, टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी है? 588 है। तो कैसे डिवाइड करेंगे रे हम इसको? किससे डिवाइड कर सकते हैं? 4 से हो सकता है क्या डिवाइड? यस, ये 4 से हो सकता है, एज वेल एज ये 4 से हो सकता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिवाइजिंग दिस हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी नियरेस्ट टू 2 डिजिट बोला है, मतलब थोड़ा सा हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। 4 1s are 4, 1 remaining, 4 2s are 16, 2 remaining, 4 7s are 28। here 4 2s are 8, 2 remaining, 4 5s are 25। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है अभी? 167 by 147 into 25। अब जाना ही है डेसिमल में, तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, चलिए कोशिश तो करते हैं। नाउ हियर आई कुड सी दैट हियर 167 है, हियर 147 है। सो सीधा सीधा व्हाट आई विल डू, 147 1s are 147। कितना रिमाइंडर बचता है रे यहाँ पे? 20 रिमाइंडर बचता है, राइट? डेसिमल पुट कर देंगे, एक जीरो ऐड कर देंगे, फिर से क्या हो गया रे? 141 147 1s are 147। तो यहाँ से 147 माइनस कर देंगे, व्हाट विल बी द सब्ट्रैक्शन? द सब्ट्रैक्शन विल बी 53। ओके, क्योंकि ये बोरो इधर हो जाता है, दो में से यहाँ पे 1 बचता है, 0 रहता है, तो इट विल बी व्हाट? 53। फिर डेसिमल हम पुट करेंगे, 5 3 डेसिमल है इसलिए 0 ऐड कर सकते हैं। नाउ लेट अस चेक 147 into what will be 530। बट ऐसे 147 को मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। 147 के आसपास ऐसा कोई नंबर है क्या जिससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो? यस, इट इज 150। 150 का थ्राइस करके देखो, क्योंकि यू कैन डू दिस ओरली। 15 3s are what? 450 and 150 का 4 टाइम्स क्या रहेगा रे? 15 4s are 60, it will be what? 600। okay, now 147 का 4 टाइम आप जब करते हो, सो ये आंसर समवेयर 580 के आसपास जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या मुझे वो 580 के आसपास चाहिए? 530 से कम चाहिए होता है डिवीजन में। ओके, सो इट विल बी व्हाट? 150 into 3, इससे काम हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 147 into 3 करेंगे। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस हो गए, जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 25। 25 3s are 75, कैरी 7, 25 1s are 25 and 7 कितना आता है रे? it will be 32, carry 3, 25 1s are 25 and 3 it will be what? 28। हमारा आंसर आया है 28.25।
आप बोलोगे मैम ये तो आंसर ऑप्शन में नहीं है, डेफिनेटली है, क्योंकि करना क्या है, हमें नियरेस्ट फाइंड करना है, हमने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन अप्लाई किया है। तो देखो आंसर विल बी व्हाट 28.40। आप बिल्कुल इसको टिक कर सकते हो। ऑल राइट, I hope this question is clear to everyone. Let us go for next question. Approximation ऐसा करो कि वैल्यू ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ से क्या किया, 150 से किया, जस्ट 3 से कम था। नहीं तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे 147 है, मैं इसको 200 में ही कन्वर्ट करता हूँ। नो, दिस इज वेरी ह्यूज अप्रोक्सीमेशन, बहुत डिफरेंस आता है। 3 या 4 से कम करने के बाद या ज्यादा करने के बाद उतना ज्यादा डिफरेंस डेफिनेटली नहीं आएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन वी हैव टू टेक अ रेशियो, किसका है देखते हैं। What is the ratio of number of females in Paradise Apartments to the number of males in Maurya Apartment? पैराडाइज के फीमेल हमें चेक करने हैं, मौर्य के मेल हमें चेक करने हैं, और इसका हमें रेशियो लेना है। तो चलिए देखते हैं जल्दी से वैल्यूज, क्या क्या वैल्यूज है। पैराडाइज के फीमेल 127, मौर्य के मेल्स 121। देखते ही पता चलता है डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो रेशियो विल बी व्हाट 127:121. Okay, which was the slide? This was 17 number. ठीक है, sorry. So 127 था क्या, अरे पहले क्या था, 121 था ना, एक बार चेक करना पड़ेगा फिर से। पैराडाइज के फीमेल्स या पैराडाइज के फीमेल 127 है, टू मेल रेशियो लेना है हमें, इसलिए क्या हो जाएगा 127:121। आंसर ऑप्शन विल बी दिस। क्योंकि देखो रिवर्स भी वे लोग देते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है कि किसको कंसीडर करें। ओके, या नेक्स्ट विल बी what is the approximate average population of Paradise, Umang and Kala Kunj apartments together? अप्रोक्सीमेट जाना है, बहुत खुशी होती है मुझे जब भी ये वर्ड रहता है, क्योंकि कैलकुलेशन ही इतने रिड्यूस हो जाते हैं ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो अप्रोक्सीमेट एवरेज पॉपुलेशन ऑफ व्हाट, पैराडाइज, उमंग एंड कला कुंज अपार्टमेंट्स टुगेदर। तो इसका मतलब हमें मेल फीमेल को ऐड करते नहीं बैठना है, डायरेक्टली टोटल डेटा लो, उसको ऐड करो। आर यू गेटिंग? यस, ओके। तो चलिए चेक करते हैं। पैराडाइज, उमंग, कला कुंज 254, 300 एंड 212, इसको हमें ऐड करना है। चलिए क्विकली ऐड कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे, सो 254, 300, 212 एवरेज निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है रे, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय व्हाट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चलिए समेशन करते हैं। इसका समेशन कैसे करना है, 2 + 3 5, 5 + 2 7, 700 मिल गया हमें। 700 + 54 + 12, जो जितना पॉसिबल है ओरल में ऐड कर दो, एक्स्ट्रा बाद में ऐड करते जाना। 4 and 2 6, 5 and 1 6 and 7 will be as it is। इसको मुझे क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब उन्होंने ये वर्ड दिया है, इसका मतलब क्लियरली समझ जाओ बेटा कि यहाँ पे डिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन देखो, 3 2s are 6, 1 remaining 16, 3 5s are 15, again 1 remaining 16, 3 5s are 15, बस कर दो, हो गया। देखो यहाँ पे 255, कितना फास्ट काम हो गया रे। नहीं तो डेसिमल लो, उसको डिवाइड करते बैठो, एक्यूरेट निकालो, क्या जरूरत है। अप्रोक्सीमेशन बहुत ही बढ़िया चीज होती है, मैथमेटिक्स में बहुत बढ़िया चीज होती है। ओके, सो डरो मत अप्रोक्सीमेशन से कि मैं अगर थोड़ा कम ज्यादा करूंगा आंसर चेंज हो गया, गलत हो गया तो क्या होगा, नहीं, बिल्कुल भी उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने। Let us check for next question. Yeah, 766/3, 255, वही मैंने आपको दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट अभी हम क्या करने जा रहे हैं, डेटा अरेंजमेंट चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, डेटा अरेंजमेंट। अब डेटा अरेंजमेंट में हमें क्या चेक करना है रे, व्हाट वी हैव टू चेक कि डेटा कैसे अरेंज करना है, फ्लोर में अरेंज करना है या फिर जस्ट अ मोमेंट, वंस अगेन। यस, हाउ टू अरेंज दैट पर्टिकुलर डेटा, सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, फ्लोर अरेंजमेंट दिया गया है, ये हमें सब कुछ चेक करना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, ताकि उसके साथ साथ आपको क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू दिस। चलिए पहले तो क्वेश्चन जैसा है वैसा हम पढ़ लेते हैं विदाउट डूइंग अ सिंगल थिंग। There are 8 person A, B, C, D, E, F, G and H living on an 8 floor building.
ground floor is numbered as 1 and topmost floor is numbered as 8, but not necessarily in the same order. Very important statement. What is the meaning of this statement but not necessarily in the same order? It means that डेटा जिस सीक्वेंस में दिया है उस सीक्वेंस में नहीं है. अब मुझे बताओ, अगर ABCDEFG वैसे ही 1 to 8 फ्लोर पे रहेंगे तो ये पजल इतना सॉल्व करने की कोई जरूरत है क्या रे? नहीं, कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, बट हमें पजल अभी सॉल्व करना है. ओके, now next, what is given? D lives on an odd numbered floor below 6th floor. There are 2 persons live between D and C. G lives on one of the odd number floors but not on the bottom floor. There is one person living between C and A who lives just below E. Don't worry, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, साथ में हम solve करेंगे. Don't take much stress of it. The total number of person living between F and B is same as the total number of person living between F and A. B lives on the floor below F. अब देखो, इतने कंडीशंस हमने पढ़ लिए, कहीं पे भी हमें पता चला क्या रे कि ये पर्सन, ये पर्टिकुलर पर्सन इस फ्लोर पे रहता है. डू वी नो एनीथिंग अबाउट दिस? नहीं, कुछ भी पता नहीं चला. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो फ्लोर्स लिख देंगे. 8 7 6 5 4 3 2 1. रिमेंबर वन थिंग, फ्लोर्स हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आने चाहिए. टॉप फ्लोर को फर्स्ट यहाँ पे मत लिखना, गलत हो जाता है. ओके, नाउ अभी ये स्टार्टिंग वाला डेटा फिर से रेफर करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कंडीशन पे आते हैं. D lives on an odd numbered floor below 6th floor. This is confirmed that D इसके नीचे ही रहता है, but on which floor? Odd numbered floor. तो odd numbered floor कौन से है रे? यहाँ पे 5वां फ्लोर है, तीसरा फ्लोर है, पहला फ्लोर है. 3 पॉसिबिलिटीज आएगी. डू आई नो एनीथिंग श्योर? नहीं, 5वें फ्लोर पे भी आएगा, तीसरे पे भी आएगा, फर्स्ट पे भी आएगा. तो अभी हम क्या करेंगे, इस फ्लोर को हाथ नहीं लगाएंगे, हम थोड़ा सा साइड में कंडीशन ड्रॉ करना शुरू कर देंगे. लेट अस पुट थोड़ा सा डी को यहाँ पे हम मिडल में रखते हैं. सी डू नॉट अज्यूम कि मैं डी को 5th फ्लोर पे रख रही हूँ. फ्लोर पे कैसे लिखना है मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी यहाँ पे फोकस करो. ठीक है, समवेयर रैंडमली डी का पोजीशन अज्यूम करो. नाउ व्हाट आई नो, अब ये इग्नोर कर दो. देयर आर 2 पर्सन लिव बिटवीन डी एंड सी. अब मुझे बताओ, टॉप या बॉटम मेंशन किया है? नहीं मेंशन किया है. तो चेक करना किसका काम है? आपका काम है. इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट डी एंड सी ऐसा आएगा, मतलब यहाँ पे 2 लोग आएंगे, 1 2. ओके, मैं डॉट्स दे रही हूँ, दिस इंडिकेट्स दैट 2 member can come there. Now what I will do, I will write D over here, bottom place 1 2, and I will put C over here. Okay, so C और D के C और D के बीच में 2 लोग, C और D के बीच में 2 लोग. नेक्स्ट कंडीशन, फ्लोर नंबर हम अभी नहीं देने वाले, एंड में देंगे हम. लुक हियर, G lives on one of the odd numbered floors but not at the bottom floor. What I know for sure, G lives on odd numbered floor but G does not live on first floor. This is confirmed. तो यहाँ पे मैंने क्रॉस किया है. नेक्स्ट, क्या मैंने कोई कंडीशन छोड़ी है? नहीं. देयर आर 2 पर्सन, यस यस डेफिनेटली, या गुड. देयर इज, नाउ लुक हियर, यहाँ से पढ़ रही हूँ मैं. देयर इज वन पर्सन लिविंग बिटवीन C and A who lives just below E. Remember one thing always in reasoning, whenever there is a word who and उसके बाद आपको अगर कुछ कंडीशन दिया है तो ये कंडीशन किसको रेफर करता है रे? The condition always refers to the person who is nearest to the who. Are you getting? Yes. तो देखो, who lives just below E? A lives just below E. Now, there is one person living between C and A. क्या मुझे C और A के बारे में कुछ पता है? डेफिनेटली पता है. देखो, I know the position of C. Now, C and A के बीच में एक पर्सन है और A E के इमीडिएट बिलो, जस्ट बिलो रहता है. अब देखो, इफ हियर इज C, कैन आई पुट A ओवर हियर? यस, आई कैन पुट A ओवर हियर. देखो यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, बट मुझे A कहाँ पे चाहिए? आई नीड A जस्ट बिलो E. यहाँ पे तो D है, क्या हम D को हटा के A को रख सकते हैं? नहीं. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? C वन मेंबर A, C एंड A के बीच में एक मेंबर रहता है. नीचे की पॉसिबिलिटी चेक करनी है.
and A who lives just below E. मतलब E कहाँ पे आएगा, confirm C और A के बीच में आएगा. Now for this arrangement C and A के बीच में वन मेंबर, अगेन ऊपर नीचे पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, बट लुक हियर, हियर दिस इज द पॉसिबिलिटी, C और A के बीच में एक मेंबर एंड A who lives just below E. टॉप वाला भी पॉसिबिलिटी हम ड्रॉ करके रखते हैं, अगर जरूरत पड़े तो हम उसके हिसाब से जाएंगे. सो C यहाँ पे कौन रहता है, A रहता है, एंड A I want where just below E. ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में ड्रॉ करती हूँ. I will erase just a moment. Yes, okay. So let us say D यहाँ पे है कहीं तो randomly D और C के बीच में दो मेंबर्स है. नेक्स्ट व्हाट इज गिवन टू अस, C एंड A के बीच में एक मेंबर है एंड A who lives just below E. देखो कितने अलग अलग पॉसिबिलिटीज आए हैं. डरना मत, ये कंडीशन एलिमिनेट हो जाएगी. ठीक है, बस ड्रॉ करके रखना आपका काम है, क्योंकि हमें पता नहीं है एग्जैक्टली क्या कहाँ पे फिट होता है. ओके, नेक्स्ट द टोटल नंबर, या दिस वी डन. The total number of person living between B and F is same as the total number of person living between F and A. Okay, what is given to us? F and B में जितने लोग रहते हैं उतने ही लोग A and F में रहते हैं. अब ये कंडीशन कब ट्रू होगा रे, ये कंडीशन कब ट्रू होगा? देखो आप लोग बोलते हो ना, मेरे राइट हैंड साइड में भी उतने ही मेंबर है, लेफ्ट हैंड साइड में भी उतने ही मेंबर है. ये कंडीशन कब ट्रू होता है? इट मीन्स दैट समवेयर यू आर इन द मिडल. आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग दिस? आप मिड में हो, इधर भी दो लोग है, इधर भी दो लोग है. ठीक है, वही कंडीशन यहाँ पे दिया है कि total number of person living between F and B is same as the total number of person living between F and A. F and A में जितने लोग उतने ही F and B में, तो somewhere हमें ये थोड़ा mid में put करना पड़ेगा. तो देखो I will start with this condition. Let us put randomly F over here. ठीक है, मैंने F को यहाँ पे रख दिया. F and A में एक member. Now I will put B over here. ट्रायल एरर चल रहा है सब कुछ, अभी कुछ फिक्स नहीं है. F and A में वन पर्सन, उतने ही पर्सन F and B में. ठीक है, नाउ अगेन हियर, यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो A है, F को हम कहाँ पे पुट करेंगे? यू कैन पुट एट टॉप मोस्ट पोजिशन. F and A में वन पर्सन है, बट अगर आप F को टॉप में पुट कर रहे हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, B का कंडीशन आएगा ही नहीं. हमें B का कंडीशन भी चाहिए, तो इज इट अ पॉसिबल केस? नहीं, ये कंडीशन एलिमिनेट होता है, क्योंकि मैं F को यहाँ पे नहीं रख सकती. अगर मैंने F को यहाँ पे रख दिया तो क्या हो जाएगा, मुझे B को यहाँ पे रखना पड़ेगा. सॉरी मुझे B को यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि F and A में जितने लोग हैं उतने ही F and B में है, जो कि चलेगा क्या? नो, इट बिकम्स इनवैलिड. सो ये कंडीशन इनवैलिड हो गया, इसको इग्नोर कर दो. यस, अभी देखो अगले कंडीशन की तरफ चलते हैं. लास्ट कंडीशन पढ़ लेते हैं. B lives on the floor below F. मुझे B कहाँ पे चाहिए? Somewhere F के below चाहिए. इसका मतलब हमने जो कंडीशन पुट किया था, इट वाज प्रॉपर, इट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो ना देखो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं F and A वाला कंडीशन, तो देखो मुझे F को यहाँ पे रखना पड़ेगा. आई हैव टू पुट F ओवर हियर. यहाँ पे दो लोग आते हैं एंड B को मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा. ठीक है, सो इफ आई पुट ओवर हियर B, और मुझे यहाँ पे बीच में तीन लोग जा रहे हैं, तो मेरा फ्लोर में क्या होता है, 9 फ्लोर आते हैं, जो इनवैलिड बनता है. मुझे मेरा अरेंजमेंट कहाँ पे फिक्स करना है? 8 फ्लोर्स तक ही फिक्स करना है. नाउ दिस इज द ओनली अरेंजमेंट, बट येट इट इज नॉट फिक्स्ड. हमें फ्लोर्स फिक्स करने हैं. एक पर्सन अभी बचा है, देखो G पर्सन बचा है, जो कि मुझे कंपलसरी ऑड फ्लोर पे चाहिए. अब ऑड फ्लोर कौन से बाकी है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायल करते हैं. लेट अस से 8 नंबर यहाँ से शुरू करते हैं. 8 7 6 5 4 3 2 1. दिस इज वन पॉसिबिलिटी. ठीक है, चेक करेगी इससे आया, डेफिनेटली आएगा ही. इससे नहीं आया है तो अदर पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, बट अदर पॉसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं होता है, कोई कंडीशन फिक्स ही नहीं होता है.
कंडीशन इनवैलिड बनते हैं, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। जी ऑड नंबर पे है बट जी फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है, तो क्या जी के लिए थर्ड फ्लोर वैकेंट है? यस वैकेंट है, तो जी को पुट कर दो यहाँ पे, एंड हु इज द रिमेनिंग पर्सन एच, उसको पुट कर दो यहाँ पे, एंड दैट्स इट, यू डन विद द अरेंजमेंट। सो प्लीज रेफर विद दिस अरेंजमेंट एंड दिस इज द मोस्ट करेक्ट। क्या होता अगर आप यहाँ से फ्लोर नंबर देना शुरू करते, तो आपको कंपल्सरी जी को फर्स्ट फ्लोर पे रखना पड़ता, जो कि डेटा इनवैलिड बोलता है, मेरा जी फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है। सो विच इज द करेक्ट अरेंजमेंट? सी ई ए डी एफ जी बी एच। नाउ बेस्ड ऑन दिस अरेंजमेंट हमें इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। चलिए जल्दी से चेक करते हैं। देखो अभी यहाँ पे क्या दिया है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर एफ लीव्स। यफ कौन से फ्लोर पे रहता है? देखो यफ कौन से फ्लोर पे रहता है रे? फोर्थ फ्लोर पे रहता है। दैट्स इट, फिगर पढ़ना है, आंसर पिक करना है, इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन्स लीव बिटवीन डी एंड सी। डी कहाँ पे है? देखो यहाँ पे है। सी कहाँ पे है? देखो यहाँ पे। कितने लोग रहते हैं उनके बीच में? 2 लोग रहते हैं। दैट्स इट। Let's check for next question. What is given over here? If all the persons are arranged alphabetically from top to bottom, then how many persons remain on the same floor? क्या करना है हमें? जो भी लोग दिए गए हैं टॉप से लेके बॉटम तक अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो ये पूछा गया है कि कितने लोगों का फ्लोर सेम रहता है। अभी हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए? ए बी सी डी ई एफ जी एच होना चाहिए। तो देखो ए बी सी डी, डी का पोजीशन चेंज हुआ? नहीं हुआ। लेट अस टिक ई एफ जी एच, एच का पोजीशन चेंज हो गया? नहीं हुआ। तो when we add the number of people in alphabetical order, तो D and H का जो पोजीशन है वो क्या रहता है? एज इट इज रहता है। सो ऐसे कितने लोग हैं जिनका पोजीशन चेंज नहीं होता? ओनली 2 मेंबर्स। ओके नेक्स्ट, अभी आप बोलोगे मैम हमने अल्फाबेटिकली रख दिया, तो क्या अभी हमें नया अरेंजमेंट रेफर करना है? नहीं, आपको पुराना वाला ही अरेंजमेंट रेफर करना है। सी these arrangement was only there for this question. ठीक है? Yes. Let's check for the next one. 4 of the following are alike in a certain way based on their arrangement. Find the one which does not belong to that group. अच्छा ठीक है। अब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, इनका कुछ ना कुछ रिलेशन है, सभी में कुछ ना कुछ एक चीज कॉमन है, बस एक पर्सन एक मेंबर उसको बिलोंग नहीं करता है। तो वो कौन सा मेंबर है? पहले तो मेंबर देख लो कौन से है। बी ए एफ सी जी। चलिए देखो यहाँ पे चेक करते हैं कौन कौन दिया है रे हमें। बी दिया है, ए दिया है, एफ दिया है, सी दिया है, जी दिया है। देखो मैंने यहाँ पे टिक मारे है B A F C G. So if you check that B lives on 2 floor, F4 A6 C8. So everyone lives on even a numbered floor except this G. G lives on odd numbered floor. देखो ये प्रॉपर्टी भी आपको एनालाइज करना पड़ता है कि एग्जैक्टली उनमें क्या चेंज है, आपको ये चेक करना है। इवन कॉम्बिनेशन है या फिर कुछ अलग सीक्वेंस बना, ये सब आपको ही एनालाइज करना है। तो जी कहाँ पे रहता है? ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, इसलिए जी डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप, ऑड वन आउट होता है। नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। इफ सी इज रिलेटेड टू ए in the same way as D is related to G, then following the same pattern F is related to what? अभी हमें क्या करना है? C A का रिलेशन ढूंढना है, D G का रिलेशन ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। C और A का रिलेशन यहाँ पे लिख देती हूँ, एज वेल एज D एंड G का रिलेशन क्या है रे? देखो C A वन गैप है, ए पर्सन सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन के बॉटम में है। नेक्स्ट डी जी, अगेन एक का गैप है, दूसरा जो पर्सन है फर्स्ट पर्सन के नीचे वाले फ्लोर पे है, बॉटम वाले फ्लोर पे है। तो अभी हमें किसके बारे में फाइंड करना था रे? सेम पैटर्न फॉलो करना है, एफ इज रिलेटेड टू व्हाट। तो देखो यहाँ पे एफ कहाँ पे है? यहाँ पे है।
वन पर्सन बॉटम में जाना है तो किसको रिलेट करेगा, बी को, एक का गैप आपको छोड़ना पड़ेगा. सो एफ इज रिलेटेड टू हुम, एफ इज रिलेटेड टू बी. ओके, सो this is something about data interpretation and data arrangement. Now as we are कमिंग टूवर्ड्स एन एंड, यहाँ पे देखो अगर हम अभी नया टॉपिक शुरू करेंगे, नया क्वेश्चन शुरू करेंगे तो वो फिनिश नहीं होगा एंड दैट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, so for today we are going to close this session little bit earlier. Again tomorrow we are going to meet at the same time, so please stay tuned with us to know more. And thank you so much everyone. We hope that you all are enjoying the session. If you are new to this channel, please refer to the previous videos as well and do visit us regularly. Thank you so much everyone. Do take very good care of yourself. Happy study and take good night. Bye bye.